जो हमारे साथ आभासी रूप से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नवीन भार्गव सर का परिचय के लिए मैं डॉक्टर संदीप कुमार सर से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आए और उनके बारे में जानकारी दें। Thank you, Deepti. Good morning to all of you and the fifth day of the first session. इस कार्यशाला के 5वें दिन के प्रथम सत्र में जिस विषय का आज व्याख्यान होने वाला है, तो इस कार्यशाला को प्रारंभ करने से पहले इस कार्यशाला में जो व्याख्यान माला थी उनके विषय आयोजन में एक विषय जिस पर काफी शोध किया गया, जिसके अंतर्गत प्रतिभागियों के काफी संदेह कि वैदिक गणित जो एक भारतीय प्राचीन ज्ञान की एक परंपरा है, उसका आधुनिक युग में क्या महत्व है, इस विषय को लेकर के इस कार्यशाला के चेयरपर्सन प्रोफेसर शिवराज सिंह ने इस बिंदु पर काफी शोध किया और इस विषय को लेकर के उन्होंने इस कार्यशाला में एक विशेष रूप से एक व्याख्यान आयोजित किया। इसी अनुक्रम में आज श्री नवीन भार्गव द नेसेसिटी ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स इन मॉडर्न एरा पर अपना व्याख्यान देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। श्री नवीन भार्गव आर्यन वैदिक मैथमेटिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपके पास देश ही नहीं विदेशों में भी अध्यापन कार्य का, वैदिक गणित पर आधारित गणितीय सूत्रों का अनुसंधान करने में, देश के भिन्न भिन्न शहरों में वैदिक गणित पर आधारित कार्यशालाओं को आयोजित करने का काफी विस्तृत अनुभव रहा है। श्री नवीन भार्गव अंतरराष्ट्रीय वैदिक गणित के ऊपर जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई इंग्लैंड में, उसमें भारत की तरफ से आपने प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद जो द्वितीय कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, उसमें भी आपने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। इसके अतिरिक्त श्री नवीन भार्गव सर ने वैदिक गणित को प्रचलित करने के लिए काफी गणितीय पुस्तकों का रचना भी की है, जिनमें मुख्य रूप से आर्यन वैदिक मैथमेटिक्स, आर्यन वैदिक मैथमेटिक्स जूनियर, जीनियस मैथमेटिक्स के रूप में गणित साहित्य में उपलब्ध हैं। तो फिर मैं बिना किसी विलंब के अब नवीन भार्गव को इस विषय पर द नेसेसिटी ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स इन द मॉडर्न एरा पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए आग्रह करता हूं। आपका स्वागत है सर। हाँ जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं इस अंतर्राष्ट्रीय
हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही। हाँ, नहीं आ रही ना, स्क्रीन पर अवेलेबल नहीं है। हेलो हेलो सर, आपको मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? नहीं। यस सर। आवाज आ पा रही है सर आपको मेरी? यस सर। यस सर, आवाज आ रही है। आपकी भी आ पा रही है हमको आवाज, आप शुरू करें सर। यस सर, आवाज आ रही है क्लियर। हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। हेलो हेलो, नवीन भार्गव सर, आपको आवाज आ रही है यहाँ से? यू कैन शेयर योर स्क्रीन। नवीन भार्गव सर, am I audible to you? इनको अनम्यूट करो। नवीन भार्गव सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट है। Sir, please rejoin the meeting for sharing your screen. Is there some technical issue? You can rejoin the meeting. हेलो। Hello. Am I audible? यस सर। Okay, thank you so much. Okay, so let us start. सबसे पहले तो मैं इस वैदिक मैथ्स की अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ।
सर वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस नहीं आ रही है, स्टिल फोटो है, जरा चेक कर लें सर। हेलो। पहले ही रख दिया करल वो। कि नवीन भार्गव सर ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इतने पेशेंस रखें और थोड़ा सा इंतजार करें, सर का अभी लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हिम। हेलो हेलो। Hello. Am I audible? Am I audible now? Am I audible now? Okay, thank you so much. Okay, so let us start.
सबसे पहले मैं इस वैदिक मैथ्स की अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता शुक्ला, प्रोफेसर वाई बिमला, प्रोफेसर एम के गुप्ता, प्रोफेसर शिवराज सिंह, प्रोफेसर मुकेश शर्मा, डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर सुरु कुमारी, डॉक्टर सोनिया गुप्ता और रश्मि यादव जी और सभी स्पीकर्स एवं सभी प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय वैदिक मैथमेटिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जिसके लिए मैं विशेष रूप से डॉक्टर सोनिया गुप्ता मैडम का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझे इस वर्कशॉप के बारे में बहुत लेट स्टेज में पता चला था। Hello. Sorry for the interruption for all the participants. We are just trying to connect Mr. Naveen Bhargav, sir. There is some network issues. So please have patience for the better network. Stay connected. Thank you. He is still trying to connect with us. So have patience. He will connect with us very soon. Naveen sir, am I audible to you? You can rejoin with your another device.
Bhargav sir, have you joined the meeting? चलिए इतने जब तक सर ज्वाइन करते हैं, वैसे तो सर ने डॉक्टर संदीप सर ने बता ही दिया है सर के बारे में, फिर भी एक दो चीजें मैं सर के बारे में बता देती हूँ. सर is a managing director of Aryans Vedic Mathematics in Jaipur. In October 2018, his team was invited by the Ministry of Thailand to train their teachers with Vedic math concepts. Naveen Bhargav was invited personally by the Education Minister of Thailand, and the government has implemented his methods in their country's schools and colleges curriculum. So that is appreciating moment. That was the appreciating moment for all the Indians, that he was honored by the Thailand ministry. In 2019, there was an initiative to honor innovative educators by IB Hub Super 30, in which he was selected a Super 30 teacher among 35,000 outstanding profiles from across India. His profile was selected for his outstanding contribution to the field of education. So just इसके लिए तो clapping की बात है. He has developed the complete and one of the best educational program in Vedic mathematics to help students, teachers, and in some schools and colleges also. He is the author of Aryan's Vedic mathematics books, module 1, 2, 3. He has written Aryan's Vedic mathematics junior books, module 1, 2, and Math Genius level 1 and 2. So these are the basic specializations of Naveen Bhargav sir. I think Naveen Bhargav sir has joined the meeting. Sir, am I audible to you? Kindly unmute yourself. Yes, sir. Now you are visible, but not audible. You are visible, but not audible, sir. Kindly, we request that you can rejoin your meeting with your another device, sir. Is there some network issues with this device?
Yes, sir. Okay, am I audible now? Yes, you are audible and visible now. Thank you so much, sir. Okay, thank you so much. Sorry for the interruption. For all the participants, now Naveen Bhargav sir is presenting his presentation with us. Okay, thank you, sir. Please continue. Yeah. ओके, सो सबसे पहले तो मैं इस वैदिक मैथ्स की अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता शुक्ला, प्रोफेसर वाई वेबला, प्रोफेसर एम.के. गुप्ता, प्रोफेसर शिवराज सिंह, प्रोफेसर मुकेश शर्मा, डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर सुरु कुमारी, डॉक्टर सोनिया गुप्ता और रश्मि यादव जी और सभी स्पीकर्स एवं प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय वैदिक मैथमेटिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जिसके लिए मैं विशेष रूप से डॉक्टर सोनिया गुप्ता मैडम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अगर मैं आज आपके बीच में हूं तो मैं मानता हूं शायद उन्हीं के कारण हूं, क्योंकि मेरे को इसके बारे में बहुत लेट स्टेज में पता चला था। बट आई वॉज क्वाइट फॉर्चुनेट कि ये 26 का सेशन किसी रीजन से मेरे को अलॉट हो पाया, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सोनिया मैम। थैंक यू सर। ये वैदिक मैथ्स एक ऐसा विषय है जो मेरे को मैथमेटिक्स में स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेस्ट था, तो ये वैदिक मैथ्स के बारे में जब मेरे को पता चला तब से ये मेरा और भी फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसको हमेशा मैं अपने हार्ट से जो है जो भी मैं करता हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो वैदिक मैथ्स न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत है, बल्कि यही वो पद्धति है जिसके बल पे कभी इंडिया विश्व गुरु हुआ करता था। आपको पता होगा कि इनफैक्ट ये सभी जानते हैं कि भारत ने दुनिया को शून्य दिया, दशमलव दिया, लेकिन इसमें सभी से मतलब मेरा वेस्टर्न कंट्रीज या यूएसए या अरब कंट्रीज इन सबसे ही है, वो भी जानते हैं लेकिन अधिकांश मानते नहीं हैं। तो उनकी भी ये नॉलेज में है कि ये सारी चीजें इंडिया से ही ओरिजिनेट हुई थी। आप जो यहाँ इंडिया में सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी दैट वाज तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो माना जाता है करीब ईसा से 700 इयर्स पहले ये डेवलप हुई थी, ठीक है। एंड उसके बाद विक्रमशिला, देन नालंदा यूनिवर्सिटी जो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। तो इस तरीके की यूनिवर्सिटीज थी जो इंडिया में जब चला करती थी, उस समय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एजुकेशन के बारे में भी ज्यादा नहीं पता था, तो देश विदेश के जितने भी मैथमेटिशियंस थे वो इंडिया आया करते थे। और आज की डेट में मैंने अभी कुछ दिन पहले ये देख रहा था, टॉप 300 यूनिवर्सिटी में एक भी इंडिया की यूनिवर्सिटी नहीं है। और जो पहली यूनिवर्सिटी जो अंडर 301 से 350 के बीच में आती है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसके अलावा दो और यूनिवर्सिटी हैं जो 351 से 400 के बीच में आती हैं। तो बेसिकली हमें ये जानना चाहिए कि जो हमारी इतनी अच्छी पद्धति थी जिसको पूरा विश्व हमारे से सीखता था, आज ये पद्धति कैसे विलुप्त हो गई। तो इसके बारे में जो मैंने अध्ययन किया है तो मेरे को पता चला जब ब्रिटिशर्स आए थे उस समय इंडिया में 2,61,000 यूनिवर्सिटीज थी, गुरुकुल हुआ करते थे बेसिकली, जो आज की डेट में आप इसको मॉडर्न स्कूल या मॉडर्न यूनिवर्सिटीज बोल सकते हैं। 2,61,000 गुरुकुल थे। और इंग्लैंड में जो पहला जो यूनिवर्सिटी बनी, जो स्कूल बना, वो 1818 में बना। और आपको देखना चाहिए कि क्योंकि इन्होंने देखा कि अगर इंडिया में जब तक हमारी शिक्षा पद्धति पर प्रहार नहीं किया जाएगा, जब तक इसको डिमोलाइज नहीं किया जाएगा, तब तक वो हमारे ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकते। और यही रीजन है कि उन्होंने सारे गुरुकुल्स पे रोक लगा दी और धीरे धीरे जो शिक्षा पद्धति थी ये विलुप्त हो गई। भारती कृष्ण जी को इसका श्रेय जाता है जिन्होंने हमारे संस्कृत के टेक्सटाइल्स से, जिनको वेदा कहते हैं, वेद 4 वेद होते हैं, इसमें ये सारी चीजें अथर्व वेद में थी।
तो बेसिकली उन्होंने ये जो एंशिएंट मैथमेटिक्स थी इसको रीडिस्कवर किया था। लेकिन आप सोचें आज से करीब 4000-5000 साल पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो प्रॉपर वैदिक जो हमारी मैथमेटिक्स होती है उसके सूत्रों पे वर्क करके उनको इन्होंने डेवलप किया था। तो आज जरूरत है जो वेद लिखे हुए हैं वो हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, उसके ऊपर तो रिसर्च होना ही चाहिए। उसके साथ साथ उस पर भी रिसर्च होना चाहिए कि जब वेदों में ये डाला गया था। तो ये मेरा मानना है कि अगर इस तरीके से हम लोग इस पे प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि केवल अगर हम लोग अपने पास पे गर्व करें कि हमने जो है 0 दिया, हमने हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर आज की डेट में ये चीज नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब बात करें वैदिक मैथमेटिक्स और मॉडर्न मैथमेटिक्स की, तो आज की डेट में मेरा स्वयं का रिसर्च कहता है कि जितने भी मैथ्स के फॉर्मूले बने हैं 95% या इवन 98% ये सारे हमारे वेदों से ही लिए गए हैं। अभी मैं आपको शो करूंगा, हमारा सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप है। जैसे आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स दिए हो तो हम तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि हमारे वेदों में इस तरीके के फॉर्मूले हैं जिसमें अगर केवल एक साइड दी हो तो हम बाकी दोनों साइड्स के बारे में बता सकते हैं, और केवल बाकी दोनों साइड्स के बारे में नहीं बता सकते, एक साइड से बनने वाले जितने भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं उनको ओरली निकाला जा सकता है। इसके आसपास भी कोई पद्धति आज तक वर्ल्ड वाइड नहीं बनी है। आधुनिक युग में आप देखेंगे वैदिक मैथ्स का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आज के जो ये प्रतिस्पर्धी युग है इसमें आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही हम अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग होने लगते हैं, एक्यूरेसी लेवल हमारा कम हो जाता है। और अगर हम एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं तो हमारा पूरा पेपर नहीं हो पाता। जबकि वैदिक मैथ्स में ऐसे फॉर्मूले जिनकी हेल्प से आपकी स्पीड 60 टाइम्स तक फास्ट आप इसको कर सकते हैं। आपने एक जनरल देखा होगा जो वैदिक मैथ्स की सभी बुक में लिखा होता है 10 से 15 टाइम्स फास्ट। मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 10 to 15 का मतलब क्या हुआ, मिनिमम 10 टाइम्स फास्ट और मैक्सिमम 15, जबकि ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं है। आज मैं सेशन में कुछ लाइव भी आपको शो करूंगा जिसमें मैं आपको शो करूंगा कि ये 60 टाइम्स तक फास्ट है। मतलब जो चीज आप कैलकुलेटर कंप्यूटर पे भी करना आपके लिए इम्पॉसिबल है, वो चीजें वैदिक मैथ्स की हेल्प से यहाँ पे ओरली की जा सकती है। अब जैसे अभी कल जो वैदिक मैथ्स की पहले सत्र में बताया गया था कि रामानुजम जी जो थे वो अगर इंडिया नहीं रहते तो शायद उनकी लाइफ काफी लंबी होती, तो उनको यहाँ पे किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। यहाँ आज भी मैं देखता हूँ बहुत लोगों में प्रतिभा है, बहुत लोगों ने इन्वेंशन किए हैं, लेकिन उनको कोई एक्सपोजर नहीं मिल पाता। और यही बात करें अगर वो यूएसए जाते हैं, यूके जाते हैं और वो देखते हैं कि आपके में कुछ टैलेंट है तो वो इसको अपने लिए यूज करते हैं, जिससे आपको नेम फेम सारी चीजें मिलती है। तो जो रामानुजम जी थे इनके बारे में भी आपको पता होगा कि क्योंकि ये सारी हमारी जो शिक्षा पद्धति थी उसी से इन्होंने जो है शिक्षा वगैरह ग्रहण की थी, जिसके कारण उन्होंने 31 ईयर की एज में इतने फॉर्मूले लिखे थे जो आज की डेट में आने वाले 500 सालों तक के लिए वो सफिशिएंट है। उस पर अभी वर्क होगा, उसके बाद भी शायद जो है उसके सारे सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए। तो आज भी ऐसे हमारे देश में हजारों लाखों प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिनको वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। अब जैसे आज जो मैं ऑनलाइन कार्यशाला को का संचालन कर पा रहा हूँ, ठीक है, और सैकड़ों लोग इसको जो है ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, ये भी हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया ज्ञान था।
चाहे आप जीरो की बात करें, चाहे आप बाइनरी सिस्टम की बात करें, आप सभी को अभी इससे पहले के सेशंस में ये बताया गया है। अगर हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो आज ना कंप्यूटर होता, ना गाड़ियां होती, ना एरोप्लेन होता। तो नाम से जो हमें लगता है आधुनिक गणित, तो हमें लगता है ये बहुत एडवांस होगा, इसमें बहुत इजी मेथड होंगे, बहुत फास्ट होंगे, एक्यूरेसी लेवल अच्छा होगा, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अब जैसे एक प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि आपको डिविजिबिलिटी, कोई नंबर को आपको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं या 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाते हैं। लेकिन डिविजिबिलिटी टेस्ट कौन से नंबर तक होते हैं? ओनली अप टू 11, केवल 11 तक ही होते हैं। 11 से ऊपर कोई नंबर से आप चेक नहीं कर पाते, जबकि प्रैक्टिकली हमें लाइफ में हर जगह एटलीस्ट 2 डिजिट के नंबर का तो जरूरत हर जगह पड़ती है। आपको चेक करना है मेरा मोबाइल नंबर 29 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको 29 का टेबल आना चाहिए, या 73 से, या 139 से। वैदिक में ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें ना केवल एक मेथड बल्कि डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 या 2 से ज्यादा मेथड्स की हेल्प से इसको सॉल्व किया जा सकता है। और वो सारे मेथड्स इतने आसान होते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल का या 10th-12th लेवल का क्वेश्चन एक 10-12 ईयर्स का स्टूडेंट भी कर सकता है, अगर वो इसके फॉर्मूलोज को समझ ले। तो इसमें आज की डेट में जितने भी आप चाहे स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वहाँ एक टाइम लिमिट होती है, आपके पास टाइम फ्रेम होता है। उस टाइम फ्रेम में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करने होते हैं और मोस्ट ऑफ देम एक्यूरेट भी होने चाहिए। तो ये चीज केवल और केवल हमारे वैदिक सिस्टम से की जा सकती है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट है, हमारे पास कन्वेंशनल मेथड में बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जहां आपको 11 के बाद 12, 13, 14, 15 किसी भी नंबर से आप चेक नहीं कर सकते। सिमिलरली पाइथागोरस थ्योरम बताया था, अगर हमारे पास इस तरीके की टेक्निक है कि एक साइड से हम दोनों साइड बता सकते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे लिए मैथमेटिक्स ये कितनी इजी हो जाएगी। इसके अलावा क्यूब रूट की बात करें, एक आपने पढ़ा होगा कि क्यूब रूट जो है केवल ये परफेक्ट क्यूब्स का ही निकाला जा सकता है। नॉन परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालना आज भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है, ये हमारे लिए असंभव है। लेकिन वैदिक मैथ्स में चाहे वो कोई भी नंबर हो, 7, 12, 15, 73, 89, 175, इन सभी नंबर्स का क्यूब रूट आप डेसिमल की 1 प्लेस इजिली निकाल सकते हैं, जबकि कन्वेंशनल मेथड में ये माना जाता है कि इसके लिए कोई मेथड ही अवेलेबल नहीं है। इसके बाद मैं आपको एक प्रेजेंटेशन आपको एक दिखाना चाहूंगा। उससे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ बेसिकली वैदिक मैथ सिस्टम इतना आसान होता क्यों है। इसमें क्या है, जिस मेथड से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे अभी पिछले सत्रों में आपने देखा होगा एक वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज मेथड होता है, ऊर्ध्व तिर्यक, ठीक है। तो ऊर्ध्व तिर्यक की हेल्प से हम कोई भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे कोई 2 डिजिट के नंबर को आपने 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किया। अब कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है, जो हमारी मॉडर्न मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा के लिए एक अलग फॉर्मूला दिया होता है, x + a × x + b = x² + a + b टाइम्स x + ab। जबकि वैदिक में सेम रूल वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज यानी कि ऊर्ध्व तिर्यक, इसकी हेल्प से हम सिंगल लाइन में इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैथ्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब आपको फैक्टराइजेशन करना है, तो जो आपने 2 अलजेब्रिक टर्म को मल्टीप्लाई किया, अगर हम इसको रिवर्स कर लें तो ये फैक्टराइजेशन बन जाता है। इसी तरीके से अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम मेथड हम यूज करते हैं, जो तिर्यक मेथड है, इसी की एक आप कह सकते हैं कोरोलरी है द्वंद्व योगा मेथड। तो बेसिकली ये दोनों अभी प्रैक्टिकली मैं आपको शो करूंगा तो आपको क्लियर होगा कि प्रैक्टिकली दोनों में हम सेम चीज कर रहे हैं। और उसके बाद जब स्क्वायर आप निकाल लेते हैं, उस प्रोसेस को हम रिवर्स करते हैं, तो इट बिकम फैक्टराइजेशन। तो ये सारे जो अलग अलग टॉपिक थे, मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन या फैक्टराइजेशन, हमने देखा ये सभी एक ही फॉर्मूले से
सॉल्व हो सकते हैं। इसी तरीके से जैसे एक मेथड है निखिलम मेथड, इसका पूरा नाम है निखिलम नवदश चरमम दशलर, दैट मींस ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। बेसिकली सभी नंबर को 9 से सब्ट्रैक्ट करते हैं और लास्ट को 10 से। अब ये सिंगल मेथड सीखने के बाद आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यू कैन फाइंड स्क्वायर्स, यू कैन फाइंड क्यूब्स, मतलब आप बहुत तरीके के क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से निगेटिव नंबर्स होते हैं, वहां भी निखिलम मेथड का यूज आता है, जिसको विनकुलम नंबर्स कहा जाता है। तो एक ही हमारे फॉर्मूले को याद करने से आपने देखा कई तरीके की अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसी तरह अगर बात करें आपको 56 का स्क्वायर निकालना है, तो वी हैव मोर देन 10 मेथड्स, हमारे पास 10 से भी ज्यादा मेथड है जिससे 56 के स्क्वायर को निकाला जा सकता है। तो इससे आपका ब्रेन ज्यादा क्रिएटिव होता है कि आपको पता होता है कि ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका भी है, तीसरा तरीका भी है। आपको पता होगा जो रीजनिंग पार्ट होता है वो यही होता है कि आपको अपना ब्रेन का यूज करना होता है कि किसी एक क्वेश्चन को हम कितने तरीके से कर सकते हैं। तो जो आप वैदिक मैथ से बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगा। आई डोंट, तो ये मोबाइल पे शायद चल नहीं रहा है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, नवीन सर ऑडिबल? हाँ जी मैम। सर आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी स्क्रीन दूसरे डिवाइस से शेयर कर दें और आप इससे कनेक्टेड रहें, आप बोल इससे दें और लैपटॉप से आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। इज इट पॉसिबल? ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। अदरवाइज एक काम और भी कर सकते हैं कि वो मैं चलिए एक बार इसको ट्राई करते हैं, अदरवाइज फिर आपको मैं प्रेजेंटेशन। Otherwise, you can send your presentation immediately. We can share your screen from our side, and you can present Okay, that. okay. So please, Just a moment, let me connect with my other device. in the meanwhile, sir, you please share your presentation to us by email. By email, please Okay, share okay. your presentation to us. Okay, right, ma'am. So can you please WhatsApp me your that email ID? You can mail your presentation. Mail. Yeah. Okay, email ID. Sir, check your WhatsApp. Just a minute. या एक बार ओनली स्क्रीन में इससे भी ट्राई कर रहा हूँ अपने लैपटॉप से, अगर एक बार ये चल जाता है ना तो इससे काफी अच्छा रहेगा। Yes, yes, of course, sir. एक मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप तो इसको अनम्यूट कर दीजिए। Okay, ma'am. Am I audible?
Yes, sir. Okay. Actually, sir, these are the demerits of online Just a moment. platform actually. So, yes, sir. Screen is sharing now. Fortunately, your screen is sharing with us. Yeah. Is it visible? Yes, sir. Okay. What is So first जो मैं slide? अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, ऊर्ध्व तिर्यक ध्यान, which is vertical and crosswise. Sir, ठीक है, तो आप देखेंगे जो जिस मेथड से हम ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं 32 wait into for a 20. moment. Sorry to interrupt you, sir. Wait for a moment. It is Yeah. written here that you are just sharing your screen, but first slide is not visible. Okay, just a moment. Is it visible now? Sir, not. We are still waiting for the presentation. Sir, you can share your presentation on the given mail ID. Check your Okay, WhatsApp okay. number. Yeah, Please, that would be better. we just run your presentation from here and you Yeah, present. just a moment. Excuse me, sir. There is an option optimization and sharing. Then you can share your screen. Optimization and share. Okay, just a moment. Please check the notification. Optimization and share. Advanced sharing option. Maybe Okay. check your advanced. Yes. Yes, Here sir. the Yes, only sir. Now share. option coming, one particular can share at a time. No such option is coming. Okay, I am just sending you one mail. सर शेयर Yeah. अभी आया था कुछ स्क्रीन शेयर करने के लिए. Is it visible now? Sir, it is showing that you have started your screen share, but still we are waiting for that. Okay, I am sending you over mail. Yes. Is it visible now? Yes. Okay, okay. So let us begin. Is it a whiteboard? No, this time I am showing you this PPT presentation, and thereafter I will do it on whiteboard. Sir, actually, it is a whiteboard here only, not your presentation showing. No, actually from the other one I am sharing. Just wait, I am sending you email.
Naveen sir? Yes, ma'am. Send both the emails. Okay. Okay, we are just trying to There are pay two your presentations. Yeah. Okay, so till the time I would like to show you some practical applications of Vedic maths. Okay. sir, we have received your presentation. So wait for a moment. We are just Yeah, the smaller one that is on the black background. we have two presentations. Which one? Yeah, Which one is to be played, sir? Sir, which one is to be played, sir? We have two presentations. that Vedic maths practical applications. Okay, sir. Yeah. ओके सो जब तक पीपीटी रेडी हो रहे हैं मैं चाहूंगा आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन में शो करूं ठीक है स्टार्ट हो ओके सो यू कैन सी ये है ऊर्ध्व तिर्यक ध्यान You, sir? इसे वर्टिकल एंड Sir, your presentation is ready. हाँ ओके सो All of you. दिस इज ऊर्ध्व तिर्यक ध्यान वर्टिकल एंड क्रॉस वाइज
जैसा कि मैं बता रहा था कि जिस मेथड का यूज हम लोग नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं, वो सेम मेथड हम लोग अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में भी यूज करते हैं, जिसके लिए स्कूल में एक अलग फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, या मतलब उसमें कई सारे फॉर्मूले होते हैं जो आपको रटने पड़ते हैं। So the conventional method is totally based on rote learning method. पूरा का पूरा जो हमारा आधुनिक गणित है, ये रोट लर्निंग मेथड होता है, मतलब रट के याद करना पड़ता है, जबकि वैदिक में एक सिस्टमैटिक मैनर में ये सारी चीजें होती हैं। जैसे आपने देखा ये उड़ते रेख, आप लोग को थोड़ा सा पता होगा कि सबसे पहले 2 into 1 करते हैं, 2 आया, इसलिए मैंने सेम कलर से लिखा है। सेकंड स्टेप क्रॉस होता है, क्रॉस मतलब 3 into 1 and 2 into 2. So 3 times 1 is 3, 2 times 2 is 2. When we add this, 3 plus 4 is 7. तो मिडिल टर्म आ गया 7 और लास्ट टर्म 3 times 2 6. सेम मेथड हम यूज करते हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में, तो इसलिए ये किसी को भी मुश्किल नहीं लगता। नेक्स्ट स्लाइड। अब सेम आपको दिखाता हूं कि जब अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन हमने किया, अगर इसको रिवर्स कर दें तो ये बन जाता है फैक्टराइजेशन, जो मैं अभी ओरली बता रहा था, क्योंकि ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो मे भी आपको ओरली वो चीज नहीं समझ में आ रही होगी, बट यहाँ आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि हम जो प्रोसेस करते हैं उड़ती रेख में 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6x स्क्वायर आ जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में 3 को 1 से एंड मिडिल वाले 2 को 2 से, तो ये आ जाएगा 7, और लास्ट में 2 को 1 से करते हैं तो आता है 2, जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है। अब फैक्टराइजेशन में क्या होता है, इसी का प्रोसेस रिवर्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं 2 के फैक्टर क्या हो गए, 2 and 1, which I have written on the right side, जो मैंने राइट साइड में लिखा है। इसी तरीके से 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3 and 2, तो ये मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है। तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे का रिवर्स है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद एक मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ विलोकानाम सूत्र दिखाता हूं बाय नियर ऑब्जर्वेशन। ये वैदिक का सबसे सुपीरियर रूल है, जिसमें वैदिक की जो भी थोड़ी सी जिसको नॉलेज होती है, जो थोड़ा सा वैदिक पे वर्क करता है, दे कैन डेवलप देयर ओन फॉर्मूलाज एंड नॉट अ सिंगल फॉर्मूला। एक से ज्यादा फॉर्मूले बहुत इजीली कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली ये वैदिक मैथ्स में फॉर्मूले बनते कैसे थे बिफोर जिस समय ये वेदों में डाले गए थे, तो ये कौन सा मेथड था, जो विलोकानाम मेथड है, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने से क्लियर हो जाएगा। ये वो मेथड था जो मैंने भी वैदिक की, मैंने आपको बताया था फर्स्ट बुक मैंने 2007 में दी थी, बट इस मेथड का यूज मैं उससे पहले से करता था, क्योंकि दिस इज कॉल्ड मेयर ऑब्जर्वेशन। अभी आप भी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि एग्जैक्टली स्क्वायर्स हम कैसे निकाल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे ये है, आप देखेंगे 101 स्क्वायर 10201, 102 स्क्वायर 10404, 103 स्क्वायर 109, 10609। अब इसमें आप देखेंगे ये हो क्या रहा है, तो आप देखेंगे 1 का डबल है 02 एंड 1 का स्क्वायर 01। सेकंड में 2 का डबल 04 एंड 2 का स्क्वायर 04। 3 का डबल 6 एंड 3 का स्क्वायर 09। 4 का डबल 8 एंड 4 का स्क्वायर 16। तो इन दिस वे अगर आपसे कोई पूछे 108 स्क्वायर, तो बिना, मेरा तो स्क्रीन पे लिखा है, अदरवाइज बिना देखे आप बता सकते हैं कि 108 है तो 8 को डबल करना है, 116 हो गया, एंड 8 स्क्वायर दैट इज 64। और यही मेथड है निखिलम मेथड। तो बेसिकली जो निखिलम मेथड है उसके भी बेस में जो विलोकानाम मेथड आता है। अब जो मैं आपको इंटर रिलेशन की बात कर रहा था कि हमने 101 का स्क्वायर निकाला 10201 आया, 107 का स्क्वायर निकाला 11449 आया। अब अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है। अब प्रोसेस भी देखिए हम रिवर्स करेंगे, वहां पे क्या हो रहा था, 100 से 6 ज्यादा था, तो दैट मीन्स जो 6 था वो हमने डबल किया था, तो अभी क्या करेंगे उसको हाफ, तो 103 आ गया। 10816 है तो केवल 108 से हम निकाल सकते हैं कि 100 प्लेस तो एज इट इज रहेगी, 08 का हाफ 04। तो दिस इज कॉल्ड बाय मेयर ऑब्जर्वेशन, विलोकनम मेथड।
अब आप देखेंगे इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि हमने फर्स्ट वाला 1 लिया, वो तो एज इट इज कॉपी कर लिया, जो कि मैंने व्हाइट कलर से शो किया है। और इसके अलावा आप स्क्वायर देखें, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो हमने आगे 04 लिख दिया। 25 किसका स्क्वायर है? 05 का। अब आप पूछेंगे ये 04 या 05 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जितने डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर में उसके डबल डिजिट आते हैं। जैसे 4 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, बट 4 का स्क्वायर 16, इट्स अ 2 डिजिट नंबर। तो इन द सेम वे यहाँ आप देख सकते हैं, कोई भी आपके पास स्क्वायर रूट आया 11664, तो आप केवल मिडिल के 16 को देख के या लास्ट के 64 को देख के 108 निकाल सकते हैं। और ये एक ऐसा मेथड है जिसपे थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई जाए तो एक 4th 5th क्लास का बच्चा जिसको ये भी नहीं पता होता कि स्क्वायर क्या होता है, लेकिन वो कर सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वैदिक मैथ्स, दिस इज द सिंप्लिसिटी ऑफ वैदिक मैथ्स, कि कितने आसान मेथड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन एकाधिकेना पूर्वेणा, ये भी बेस्ड है विलोकनम मेथड पे। यहाँ भी देखें आप क्या देख रहे हैं, 15 स्क्वायर 225, 25 स्क्वायर 625, 35 स्क्वायर 1225। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 की जगह ऑलवेज 25 आ रहा है। आप सारे में देख सकते हैं इन प्लेस ऑफ 5, तो जब भी लास्ट में 5 है उसमें क्या होगा, स्क्वायर 25 आता है। और फर्स्ट डिजिट हम क्या देखते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 15 का जो 1 है उसको सक्सेसर से मल्टीप्लाई करते हैं, एकाधिक से, कहलाता है एकाधिकेन पूर्वेण, जो नंबर है उससे एक ज्यादा, इसको डॉट से शो करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 2, सेकंड देखें 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 6, थर्ड देखें 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 12। तो अब किसी ने आपसे पूछा 75 स्क्वायर, तो बिना नंबर देखे आप कैसे इसको निकाल सकते हैं? 7 इज द फर्स्ट नंबर, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है उसके सक्सेसर से। 7 टाइम्स 8 इज 56 और 5 स्क्वायर 25, तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 5625। अब इवन यहाँ तो मैंने 95 तक दिया है, आपसे किसी ने पूछा 125 का स्क्वायर 125, सेम मेथड हमें लगाना है, 12 टाइम्स 13, क्योंकि 125 में 12 इज द जो 5 अगर छोड़ देते हैं 12 है, 12 को सक्सेसर मींस 13 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आएगा 156 और आगे 25, तो 15625 आ गया। अब इसका हम रिवर्स करते हैं तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट, जिसके लिए हमारे पास एक बहुत टिपिकल मेथड होता है कि पहले 2 का पेयर बनाते हैं, फिर वो स्क्वायर देखते हैं, देन उसको डबल करते हैं, फिर उससे डिवाइड करते हैं। आप देखेंगे इसमें बहुत टाइम और स्पेस कंज्यूम होता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो आप देखेंगे और भी ज्यादा, वहां पे आपको जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो और भी कई सारे स्टेप आपको डेसिमल की सेकंड प्लेस तक निकालना है। इफ नंबर इज ऑफ 3 और 4 डिजिट तो आपके करीब करीब 8 से 10 लाइंस लग जाती है, और एक्यूरेसी वहां पे बिल्कुल ही नहीं होती, कब रॉन्ग हो जाए ये आपको नहीं पता होता। अब आप इसमें देखेंगे आपके पास 4225 आया, तो अब आपको जस्ट रिवर्स सोचना है, रेसिप्रोकल 25 लास्ट में 25 है तो ऑब्वियसली 5 आएगा, एंड 42 मैं 4225 का बता रहा हूँ, इसका स्क्वायर रूट 65 होता है। अब 42 हमें देखना है कौन से 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीपल है, कौन से 2 लगातार आने वाली संख्याओं का ये मल्टीपल है। तो ये 6 और 7 है, तो यहाँ से हम छोटा नंबर ले लेंगे 6, क्योंकि अभी पहले हमने सीखा था 65 का स्क्वायर 6 को सक्सेसर से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ भी उसी कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि 42 है तो वो 6 टाइम्स 7 है, तो यहाँ से हमें पिक कौन सा करना है, स्मॉलर नंबर दैट इज 6, तो आंसर हो गया 65। किसी ने पूछा 2025, तो आंसर होगा 2025 45, क्योंकि 20 क्या है 4 into 5, स्मॉलर नंबर पिक किया 4 और लास्ट में 5। आई थिंक इसमें कुछ नेक्स्ट भी है स्लाइड, ओके नहीं ठीक है। इसके बाद एक मैं आपको छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन के बाद आप इस पे जो है क्वेश्चंस आप एक और स्लाइड है वो दिखाऊंगा, उसमें आपको बहुत ब्रीफ, ये काफी नॉट ब्रीफ इवन यू कैन से डिटेल्ड कंपैरिजन है कि वैदिक मेथड और कन्वेंशनल वाले में कितना डिफरेंस है,
किस तरीके से हम वैदिक मैथ्स में करते हैं, किस तरीके से कन्वेंशनल मेथड में करते हैं। उसके पहले एक मैं आपको पहले डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा। इसमें जो आपको मैं बता रहा था पाइथागोरस, इवन क्यूब्स, क्यूब रूट, ये सारी चीजें आपको मैं दिखाता हूँ। ये बहुत छोटा सा सेशन है और बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके लिए अगर आप लोग के पास किसी के पास कैलकुलेटर वगैरह है वो आप प्लीज कैरी कर लें, क्योंकि इसमें या आप अपने मोबाइल पे भी कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। बिकॉज ये मैथमेटिकल में जो शो करने वाला हूँ तो यहाँ बहुत नेसेसिटी है कि आपके पास कोई डिवाइस होनी चाहिए जिसपे आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकें। सबसे पहले तो हमारी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं, ये ऑलमोस्ट सभी को पता होता है कि बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है। आप इसमें चैट बॉक्स में आप में से कोई भी कुछ नंबर 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4, 5, 6, 7 डिजिट का कोई भी नंबर आप इसमें टाइप कर दें। उसको मैं आपको शो करता हूँ डिवीजन बाय 5। इसमें कई सारी चीजें हैं, सक्सेसिवली मैं आपको 1 बाय 1 ये सारी चीज शो करता हूँ। ओके 6, 7, 9, 9। आंसर वुड बी 13597.8। 13597.8। तो आपने देखा होगा ये आंसर इस तरीके से आता है जैसे पहले से ये लर्न। अब आपको एक चीज और बताता हूँ, पाई की जो वैल्यू है जनरली जो हम लोग यूज करते हैं 22/7। कोई भी क्वेश्चन आता है जहाँ पे हमें डेसिमल में आंसर निकालना होता है, जब रेडियस जो होता है वो 7 का मल्टीपल ना हो। अगर 7 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, तो हमें इसको डेसिमल में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ शो करता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी एक नंबर ले लो, बिकॉज मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू शो यू द डेसिमल पार्ट। आपको मैं डेसिमल पार्ट शो कर रहा हूँ। तो आप कोई भी नंबर 1 से 6 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पे आप लिख दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एनीबडी कोई भी टाइप कर दें, जिसका सबसे पहले आएगा उसको मैं यहाँ पे शो करता हूँ। ठीक है, 3। आंसर वुड बी 0.428571 बार। बार मतलब होता है ये रिपीट होगा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। 0.428571। आप देखेंगे इसका आंसर इतना फास्ट आता है और इसमें मिस्टेक होने की कोई भी चांस नहीं होती। तीसरा एक मैं एग्जांपल आता हूँ जिसमें नॉर्मली स्कूल में कहा जाता है या कॉलेज में या कहीं भी हमें 20 तक के टेबल की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब अगर जैसे एक मैंने देखा है किसी क्लास में, आई थिंक 9th में या 10th में एक क्वेश्चन भी है जिसमें यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1/17। अगर इसको हम कन्वेंशनल मेथड से ट्राई करें, आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको। तो अगर हम 17 से 1 को डिवाइड करते हैं, कन्वेंशनल मेथड इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे क्या होगा, 1 नहीं जाता तो वी हैव टू प्लेस अ 0। सो 10 और 10 को नहीं जाता, 1 मोर 0। अब 17 का टेबल आना चाहिए। 17 टाइम्स 5 इज 85, बचा 15, 150। 17 टाइम्स 8 इज 136। इन दिस वे अभी हमारे 3 ही डिजिट निकले हैं। ऐसे 17 है तो यहाँ पे 16 डिजिट आते हैं डेसिमल के। So it become very difficult, very time consuming and space consuming too. और इसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई तो आपके पास कोई आइडेंटिफाई करने का मेथड नहीं होता। जबकि वैदिक की बात करें तो मैं इसमें थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेता हूँ, 19। जो यहाँ पे वैदिक मैथ्स के एक्सपर्ट हैं इन सबको ये बहुत अच्छे से पता होगा। ये एकाधिकेन पूर्वेण की हेल्प से जो है इसको मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ भी मैं 19 से डिवाइड कर रहा हूँ और मैं डेसिमल पार्ट शो कर रहा हूँ। तो आप लोग कोई भी 1 से 18 तक कोई भी नंबर आप इसमें टाइप कर दें। एनी नंबर विथ ओके 18। सबसे पहले मैंने बोला था जिसका आ जाएगा उसका मैं ले लो। ठीक है,
मैंने आंसर लिख दिया एंड द आंसर इज, ये आप देखें आंसर 0.9476842105263157। ये आप देखेंगे, ये मैंने इसको जितने टाइम में किया है, आई थिंक ये पूरा विजिबल नहीं है। ओके, नाउ इट इज आई थिंक कंप्लीटली विजिबल। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये हम लोग लेफ्ट टू राइट भी लिख सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी। तो ये वैदिक मैथ्स के इस तरीके के मेथड्स होते हैं जो बच्चों में इंटरेस्ट भी क्रिएट करते हैं कि जो चीज कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो। तो डेफिनेटली, और इन्हीं सारी टेक्निक्स का यूज अगर करते हैं तो डेफिनेटली हमारी कंट्री बहुत आगे जाएगी। इसके बाद एक आपको मैं बहुत इम्पोर्टेंट जो इसका अभी पाइथागोरस थ्योरम की मैं बात कर रहा था, तो इसमें क्या होता है कि जब दो साइड्स दी हो तो वी कैन कैलकुलेट द थर्ड साइड। अब यहाँ मैं दो एग्जांपल ले लेता हूँ। आप में से कोई 2 डिजिट का नंबर आप लिख दें, तो एक साइड में वो लेता हूँ, एक साइड से मैं बाकी दोनों साइड निकालूंगा। आप देखिए इसमें टाइम कितना लगता है। कोई भी एनी 2 डिजिट नंबर, कोई भी बड़ा छोटा जो आपको लगे कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, एक आया है 87 एंड सेकंड वन इज 45। 87 एंड 40। One of the side is 87, so the second side would be 116 and third side would be 145. When we talk about this 40, 48 and 50, अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 87 स्क्वायर 7569 विजिबल है ना? 116 स्क्वायर 13456, when you will add 21025, तो ये क्या है, ये इसका स्क्वायर है। मतलब मैंने 87 स्क्वायर निकाला प्लस 116 स्क्वायर और दोनों का ऐड किया 21025। अब ये किसी भी और मेथड से, ये मेरा चैलेंज है, अगर वैदिक मैथ्स का यूज नहीं किया जाए तो nobody can find this even in 30 minutes. No angle, nothing else is given. ये भी मैं वेरीफाई करा देता हूँ। 14 स्क्वायर 196, 48 स्क्वायर 2304, जब हम ऐड करते हैं 2500, which is स्क्वायर ऑफ 50। तो ये हमारी वैदिक मैथ्स की टेक्निक थी जो इतनी एडवांस थी कि एक साइड से जब आप दो साइड बता सकते हैं, तो व्हेन टू साइड्स आर गिवन, तो आपको पता होगा बच्चे देखते ही उसका आंसर आ जाता है उनका कि क्या होगा ये। तो सबसे बड़ी चीज ये ब्रेन पे वर्क करता है कि बच्चा इसको सोचता है कि इसका आंसर कई तरीके से निकाला जा सकता है। अब इसमें जो मैं बताऊंगा, केवल ये 87 का यही कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, देयर वुड बी मेनी मोर कॉम्बिनेशंस, देयर वुड बी मेनी मोर। इमीडिएट दूसरा पीपीटी देख लेंगे, उसमें काफी इंफॉर्मेटिव है। सो बस एक दो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब आप एक काम कीजिए, निखिलम का मैं स्क्वायर और क्यूब ले लेते हैं। क्यूब्स के लिए बेसिकली क्या होता है, देखिए नॉर्मली हमारी आइडेंटिटी यूज करते हैं कि जहाँ पे आपका 100 या 1000 या 10,000 के पास होना चाहिए, मतलब डिफरेंस शुड बी 4, 5, 8, 10 जस्ट लाइक दैट। तो कोई भी ऐसा नंबर ले लेना, जैसे मैं आपको एक लिमिट दे देता हूँ कि 9,980 समथिंग, या ठीक है इस तरीके से कोई भी नंबर, या 3 डिजिट का ले सकते हैं 998, 994, 989, या 4 डिजिट 5 डिजिट, ये मैटर नहीं करता। बट हाँ डिफरेंस, जैसे अगर मान लीजिए 9986 मैंने ले लिया, इसका डिफरेंस क्या है 14। हालांकि नॉर्मली इसका डिफरेंस जो है वो सिंगल डिजिट का होता है, बट डबल डिजिट भी हम कर सकते हैं।
तो बेटर है आप लोग कोई सिंगल डिजिट ले लीजिए या डबल भी ले लीजिए, लाइक 9980 समथिंग और 90 समथिंग, एनी नंबर, और इसको आप लोग वेरीफाई करते चलिएगा। एनीबडी? ठीक है, 99993। ओके, आई एम गोइंग टू राइट इट्स आंसर, 99993 क्यूब। This is the answer. पूरा विजिबल है? मैं बोल लेता हूँ, दिस इज 997900146996999657। इसके बाद में रिक्वेस्ट करूंगा, एक जो और पीपीटी थी वो आप चला दें, तो उसमें आपको ये देखने को भी मिलेगा कि किस तरीके से दोनों मेथड में क्या कंपैरिजन है। अगर इसको हम कन्वेंशनल मेथड से करते तो इसमें बहुत टाइम भी लगता है और एक्यूरेसी तो बिल्कुल नहीं आती। Sir, should I share your second PPT? और इसमें आप 4455 सेकंड में आप स्लाइड चेंज करते रहिएगा। Hello, Naveen sir. Yeah, ma'am. Sir, we have shared your second PPT. Yeah. सेकंड पीपीटी में आप 5 सेकंड में स्लाइड चेंज करते रहिएगा। Okay. आई थिंक आज स्टार्टिंग में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था, उसके कारण मैंने शायद थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। इवन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें मैंने काफी टाइम से, जैसा मैंने बताया, इस पे रिसर्च किया था, दैट्स व्हाई इसमें मेरे पास काफी सारी मेथड्स हैं व्हिच इज बियॉन्ड जो अभी वैदिक मैथ्स जो करिकुलम चलता है इसके बियॉन्ड। जिनमें से एक क्वेश्चंस जो आपको शायद पता होगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है। जैसे कोई भी नंबर ऊपर आपने ले लिया, से 7 6 8 6 2 5, अब आपको ये बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। Sir, is it visible to you? हाँ जी, या आप ये 4455 सेकंड में आप चेंज करते जाइए स्लाइड। Okay, okay. The first slide ठीक है, is ये मैंने आपको बताया ही था कि ये 5000 इयर्स ओल्ड है, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आज की डेट में कॉलेज में, स्कूल में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर जगह में इसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, बेनिफिट्स भी मैंने आपको एक ब्रीफ कर दिया था कि हर एग्जाम में स्पीड चाहिए होती है और स्पीड के साथ एक्यूरेसी। और जो सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंट फीचर होता है दैट इज इंटेलिजेंट गेसिंग, कि बच्चा क्वेश्चन को देख के उसमें से आंसर को वो आइडेंटिफाई कर लेता है। ये वैदिक मैथ्स की पावर है। नेक्स्ट, इसके अलावा इसमें जो आपको मैं बता रहा था, एक ही क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड होते हैं। अभी आप देखेंगे जो टेक्निक्स हैं, जैसा मैं बता रहा था
not up to 15 times, it is up to 60 times fast. अब जैसे ये स्क्वायर है, ये सभी को पता होगा, यहाँ पे निखिलम की कोरोलरी है यावदूनम, जिसका पूरा नाम होता है यावदूनम तावदूनी कृत्या वर्गम च युज्य। दैट मींस व्हाटएवर इज द डिफिशियंसी, डिडक्ट द सेम अमाउंट एंड सेट अप द स्क्वायर। जो मैंने आपको 100, 200, 300, 4 दिखाया था, इन द सेम वे यहाँ पे देखते हैं 987 इज 13 लेस, तो फर्दर हमने क्या किया, 13 को और रिड्यूस कर लिया, तो आंसर विल बिकम 974। और राइट साइड पार्ट क्या था, जैसे पहले हम स्क्वायर कर रहे थे, इन द सेम वे 13 स्क्वायर 169। तो आप देखिए इसमें कितना सिंपल आ गया। और जो लेफ्ट साइड में ये है सो कॉल्ड शॉर्टकट मेथड, आइडेंटिटी को माना जाता है ये शॉर्टकट मेथड है, इससे बहुत जल्दी आंसर आता है। यू कैन कंपेयर व्हिच वन इज बेटर। नेक्स्ट क्यूब रूट है, इसमें ये भी मोस्टली काफी वाइडली यूज होता है आज के डेट में, वैदिक मैथ्स का ये भी मेथड है। जो राइट साइड में आप देखेंगे, कोई भी आप बता सकता है कि ये 96 का क्यूब है, लेकिन कन्वेंशनल में एक पेज, नेक्स्ट स्लाइड, एक पेज के बाद ये देखें सेकंड पेज एंड थर्ड में भी, तब जाके हमारा ये आंसर आता है। नेक्स्ट स्लाइड। क्यूब जो अभी मैंने आपको शो किया था, ये क्यूब जो है ये यावदूनम और विदकुलम मेथड के कॉम्बिनेशन से करते हैं जब ये बेस से कम होता है। जैसे दिस वाज 7 लेस, अगर बेस से अबव होता है तो विदकुलम की जरूरत नहीं पड़ती, ओनली निखिलम मेथड की हेल्प से ये हम निकाल सकते हैं। आप ये कन्वेंशनल मेथड में देखेंगे, कन्वेंशनल में तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और वैदिक में आप 1 लाइन में भी निकाल सकते हैं, विदकुलम का यूज करके 2 लाइन में निकाल सकते हैं। बेसिकली वी स्टार्ट फ्रॉम विदकुलम एंड लेटर ऑन वो 1 लाइन में आपका आंसर आने लगता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखें जो शॉर्टकट, सो कॉल्ड शॉर्टकट मेथड, इसको कहा जाता है ये शॉर्टकट। अगर आप इसके स्टेप्स देखें, इतना लिखने में तो बच्चे का अगर 2 मिनट का टाइम है तो वो कंज्यूम हो जाएगा, और जबकि हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या कहीं भी हमारे पास टाइम फ्रेम होता है कि आपके पास 30 सेकंड है, 40 सेकंड है, इन दैट टाइम लिमिट यू हैव टू सॉल्व, व्हिच इज नॉट पॉसिबल बाय कन्वेंशन। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, दिस इज रिवर्स ऑफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। इसमें कन्वेंशनल मेथड दिया है ताकि आप उससे कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड। ये पहला पेज, देन सेकंड, आप फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट थर्ड में आप ये प्लस माइनस करके देखते हैं कि मिडिल टर्म -11 कब आ रहा है। नेक्स्ट दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड, एंड देन इन फिफ्थ स्टेप जब हमारा मिडिल टर्म आ गया तो उसको स्प्लिट करके ये लिखते हैं। वैदिक में हमारे पास एक रेशियो मेथड भी होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये तुरंत निकाला जा सकता है। अदरवाइज विलोकानाम मेथड मैं प्रीफर करता हूँ सबसे ज्यादा, लेकिन जब बड़े नंबर्स आ जाते हैं उसके लिए रेशियो मेथड भी बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट ये है क्यूबिकल फैक्टराइजेशन। ये तो बेसिकली अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथड से करते हैं तो इट टेक मोर देन 3-4 मिनट्स। जो एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसको मिनिमम 3 मिनट लगता है। इसके स्टेप्स देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट पेज, दिस इज ट्रेडिशनल मेथड। नेक्स्ट दिस इज सेकंड पेज। नेक्स्ट दिस इज थर्ड पेज। नेक्स्ट दिस इज फोर्थ पेज। अब जाके फाइनली हमारा बॉटम में ये आंसर आया। नेक्स्ट अब ये है 1 लाइन वैदिक मेथड। ये भी वही विलोका नाम की हेल्प से आप देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, और उसको हम जैसे ही रिवर्स करते हैं इट बिकम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ आप देखेंगे, आप एक लाइन में आंसर तो लिख ही सकते हैं, अगर इफ समवेयर यू हैव टू राइट द स्टेप्स, अगर आपको कहीं पे स्टेप्स लिखने हो तो हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अब ये देखें, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जो हायर क्लास में कॉलेजेस में ये आते हैं। तो आप देखें इसका प्रोसीजर, ये अगेन ये ट्रेडिशनल मेथड है। 1 पेज, नेक्स्ट पेज, दिस इज सेकंड, 2 पेजेस, नेक्स्ट। तो आपने देखा उसमें 2 पेजेस लगे, जो आप करने बैठते हैं उसमें पूरा इक्वेशन बनता है, इट टेक्स टू मच टाइम। वैदिक में डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है, और ये आप विद इन 10 सेकंड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर से जाती है एंड रिटर्न होती है 40 से, या कुछ भी ऐसा 120 से जाती है 80 से रिटर्न होती है, या 150 से जाती है 50 से रिटर्न होती है। अब इसके लिए पूरा हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है, जो आप इसमें देख सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड। नेक्स्ट, ये सेकंड पेज। अब वैदिक से आप देखेंगे लास्ट में, आई थिंक वो शायद विजिबल नहीं है, वो सिंगल लाइन में आ जाता है। अब ये दिस इज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये शायद आप जिन्होंने पहले का सेशन अटेंड किया होगा, जेम्स ग्लोवर सर ने भी इसका मेथड शो किया था कि ओनली फर्स्ट क्लास से हमारा आंसर आ जाता है। अब यहाँ देखिए ट्रेडिशनल मेथड में ऐड करने का वो शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, व्हिच इज अगेन टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट, नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड एवरेज, जहां पे हमारा विद इन 5 to 7 सेकंड आ जाता है। नेक्स्ट, ये भी देखें जो आइडेंटिटी जो मैं बता रहा था, यहाँ तो सिंपली निखिलम मेथड का यूज करके हमारा सिंगल लाइन में आंसर आता है। नेक्स्ट, ये कुछ कंपैरिजन दिया था कि जो कन्वेंशनल मेथड में आपको 2 मिनट से भी ज्यादा लगता है लीनियर इक्वेशंस होता है, जबकि वैदिक में मोस्टली ये ओरली आते हैं, दैट्स व्हाई वो 6 सेकंड लिखा है कि अगर इफ यू हैव टू राइट इट। नेक्स्ट, अब यहाँ कुछ एग्जांपल दिए, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि 85 का स्क्वायर है तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 9। नेक्स्ट, अब ये उसी की कोरोलरी है कि 85 into 85 में बेसिकली क्या हो रहा था, फर्स्ट डिजिट वाज सेम एंड लास्ट डिजिट सम वाज 10, तो ऐसा कोई भी नंबर 36 34 में भी सेम हो रहा है, 3 is same, so we have to multiply 3 by successor, 3 times 4 12 and 6 times 4 24। ये आप एग्जांपल से देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, और विद इन 2-3 एग्जांपल करने के बाद आप भी इसको ओरली कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो मैं आपसे बात कर रहा था डिविजिबिलिटी टेस्ट, चाहे वो यहाँ मैंने 23 का एग्जांपल लिया, नंबर कोई भी हो, 48 हो, 49 हो, 50, 52, 78, 129, इन सारे नंबर्स को बहुत इजीली किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया था 2001 23 से डिवाइड करना, तो बेसिकली इसका हम लोग ऑपरेटर सेलेक्ट करते हैं। इसके भी दो मेथड है, नेगेटिव ऑपरेटर होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ मैंने पॉजिटिव लिया है, जिससे 7 से सिंपली लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग डिजिट में ऐड कर लेना है, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि थर्ड स्टेप में आपका आ गया 69 which is the multiple of 23, so it is divisible। नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद कुछ ये तो नेक्स्ट, टर्न करते जाएं। ये स्लाइड है जिसमें नवीन भार्गव सर का थाईलैंड में जो सम्मान कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ थाईलैंड। बेसिकली इसमें इन्होंने थोड़ी हेडिंग गलत दी थी, नॉट ओनली ये कोई सम्मान के लिए नहीं था, बेसिकली इन्होंने अपने कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो इट वाज एन ऑफिशियल ट्रिप जिसमें and since 2018 they are using पूरी कंट्री वाइड, क्योंकि ये सिस्टम बहुत बेटर है जो हमारे कन्वेंशनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये था जो अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जो शायद आपको सुनने में भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है कि 100 सवाल को 1 मिनट में पढ़ कैसे सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स फॉर्मूला, ये भी वही बिलो का नाम रखा गया, जिसकी हेल्प से 150 क्वेश्चन, मैंने जो हमारा रिकॉर्ड है 150 क्वेश्चन इन 1 मिनट। नेक्स्ट, तो इस पे कई सारी मैंने जो वर्कशॉप्स वगैरह। नेक्स्ट, गुड सर ने ये सारी ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप भी इसको बनाओ। नहीं ठीक है, तो ये था, सारी सही है। और आई थिंक मैंने काफी, हाँ, ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जिनको 10 तक की टेबल ठीक से नहीं आती, दे हैव इम्प्रेस्ड बिल क्लिंटन। ये 2014 में आए थे जयपुर में संस्कृत स्कूल, तो अक्षय पात्र वालों के साथ एक जॉइंट वेंचर था जिसमें वैदिक मैथ्स का हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने। सर एक्चुअली वी शुड शो दीज प्रेस नोट्स, बिकॉज अगर हम ये दिखाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जिसमें 10 डिजिट के नंबर को अनदर 10 डिजिट के नंबर से गवर्नमेंट स्कूल के 7th और 8th क्लास के 2 बच्चों ने किया था साइमल्टेनियसली,
एंड ये जो है टाइम्स ऑफ इंडिया की कवरेज आई थी फ्रंट पेज पे। दिस इज ब्यूटी ऑफ वैदिक मैथ्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक मैंने काफी टाइम आप लोग का ले लिया, बेसिकली वो बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ गया था जिसके कारण एक्चुअली सर मेरे पास तो और भी बहुत कुछ शेयर करने के लिए, लेकिन मैंने कहा फिर इन फ्यूचर कभी फिर हम लोग कुछ इस तरीके का ऑर्गेनाइज करते हैं तो डेफिनेटली मैं कुछ और इनोवेटिव वो करना चाहूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से आप पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेरी? Is there any query from online participants? Then you can raise your hand to ask the query. From Naveen Bhargav sir. Yeah, I am actually already in group, so from there you can take my number. Or I am sharing in chat box. Yes, please. तो ये तमाम स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में ये होती है, जैसे मैंने बनस्थली यूनिवर्सिटी में आई थिंक 2016 या If someone 17 is में having any शो query, किया था। then raise वो your मेरा एक और रिकॉर्ड है जिसमें 100 क्वेश्चन वो मिनिमम टाइम था 24 सेकंड। If someone want to ask any query from Naveen Bhargav sir, then you can raise your hand or you can write a question on the chat box. Yes, we have a query from the offline participants. Yes, sir. We are just giving a mic to you. Sir, first introduce yourself. Please stand up, sir. हेलो, हाँ नमस्कार सर। सर मैं शरद शर्मा, और मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने बताया था 18/19, इसको जो सॉल्व किया है उसमें आपने वैदिक मैथमेटिक्स का कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? हेलो Sir, one participant is asking a question. Is he audible to you, Naveen sir? तो है Sharad sir, please come on the stage and ask your question. Naveen sir, am I audible to you? Naveen sir, am I audible to you? Naveen sir? Naveen sir? Are you with us or not? Naveen sir? Sir, please unmute yourself. Naveen sir? Please unmute yourself. One participant wants to ask a question. There is a query. Regarding your presentation, there is a query, sir. Kindly unmute yourself. Naveen, sir. Naveen, sir, can you join with your mobile for giving the answer of our queries? Just join with your mobile phone, Naveen, sir. Is there any network issue? I think that's why we request that please join with the another device like your mobile phone to answer the queries which are raised from all the participants. Some queries, some are raising hands in the chat box.
Okay, I would like to invite Mr. Dr. Sir. I would like to invite Dr. Sandeep sir to conclude the session. There is some network issues with the Naveen Bhargav sir. Okay, sir, please welcome. Hello. Hello. Yeah. Uh, However, there are some network glitches, but presentation is nice, and because there are coming many queries from the side of the participants. So on the behalf of the participants and the Department of the Mathematics, I convey my deep gratitude to the speaker for delivering the beautiful lecture on the topic of the necessity of the Vedic mathematics on the modern era. So a lot of thanks and my best regards to the speaker. Thank you very much. And I'm concluding this lecture. Thank you very much. Thank you, Sandeep sir. अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे अराउंड 30 minutes. We'll start with 12:30 now. Stay connected.
A very good afternoon to all of you. हम यहाँ फिर से उपस्थित हुए हैं 5वें दिन के द्वितीय सत्र के लिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारे बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अनुराधा गुप्ता मैम आई हुई हैं, जो मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन देंगी। और इस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर मुकेश कुमार शर्मा सर करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। इसी बीच में मैं कुछ मैम के बारे में बताना चाहूँगी। मैम इज अ एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मैम के बहुत सारे रिसर्च पेपर आ चुके हैं, जिनमें से कुछ 72 पब्लिकेशंस हैं और मैम की 89 साइटेशंस हैं। अभी लेटेस्ट मैम के 5 पेपर्स, रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हुए हैं SCI एंड स्कूपर्स जर्नल में। इसी के साथ मैम हैज एक्टेड एज अ Ma'am has served as the acting principal of Delhi College of Arts and Commerce since 25th May 2020. Her research area is complex analysis, calculus, algebra, real analysis, business mathematics, measure, integration, differential equations, and so on. Her teaching experience is more than 34 years. Around 10 PhD has been awarded under her guidance, and now 6 are already registered. Ma'am is working as a member of so many committees, and now I would like to invite Professor Mukesh Kumar Sharma sir. Okay. Sir, please. A very good afternoon to all of you. I welcome you all in the second session on the 5th day of this international workshop on Vedic mathematics. The speaker of today's session, this session is Dr. Anuradha Gupta. He is from Delhi University. Dr. Sonia has told about her in detail. So I invite Dr. Anuradha Gupta ji for delivering this talk. I welcome you, ma'am. इसको बंद करके शेयर स्क्रीन। आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, सोनिया जी, शिवराज जी और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स for inviting me to give a talk on divisibility. Skip a zero. से ज़्यादा नहीं हो गई। Although we have long association with Chaudhary Charan Singh University related to Vedic mathematics, but we never met. I am meeting for the first time Professor Shivraj Singh and Sonia ji, but we used to have meetings online so many times. Today, the topic which is given to me for this talk is divisibility using Nikhilum. So we need
Few things before I start. First is the rekhank. Rekhank or bar. See, in decimal number system, when we write negative numbers, can I sit? Right? Mhm. Hello. In decimal number system, in decimal number, when we write negative numbers, we put a hyphen before the number. Means if we write -7, so we put this hyphen before 7. But in Vedic mathematics, we put a bar. So for this, we write 7 bar. Now, how do we use this bar? If, for example, I say 7, 7 can be written as 10 minus 3. Or we can write this as 10 plus 3 bar, which is same as 1 3 bar. So in this way, we use this rekhank. Similarly, if suppose I have 5 minus 3, this is same as 5 plus 3 bar, and which is same as 2. Similarly, if suppose I add -2 minus 3, which is same as -5. So in Vedic maths, we write 2 bar plus 3 bar, which is same as 5 bar. So this is the meaning of rekhank in Vedic mathematics. Now, if suppose you have this 127, this 127, this can be written as directly if you want to find out rekhank. So what we do, we subtract all from 9, last from 10, right? Last digit is this 7. 7 minus 3 is 3. 10 minus 7 is 3. So we'll put a bar. 9 minus 2. 9 minus 2 is 7 bar, and we subtract 1 from the last, so it is 0. So directly we can find rekhank in this way. Let me give another example. If suppose you have 2178, if you want to find out the vinculum, this is known as vinculum. So what is this vinculum? That we subtract all numbers from 9, last from 10, except the most significant. See, this number is most significant in number system. This is units place, tens place, 100, 1000. So that is why the rightmost is known as the most significant, and leftmost is known as the least significant. So what we do, how do we find the vinculum of this number? This is vinculum. This is 10 minus 8 is 2. So we write 2 bar. 9 minus 7 is 2. This is 2 bar. 9 minus 1 is 8 bar. And we subtract 1 from the most significant. 2 minus 1 is 1. So this is the vinculum of this number. Now, what is the use of this vinculum? See, when we divide any number with another number, if we can easily remember the tables from 1 to 20. If suppose I say that you divide a number by 89, it's very difficult to learn the table of 89. So for that purpose, we use this vinculum. Whenever the digits are 5 or more than 5, we first find the vinculum and then find the then divide. For example, if you have a number 2, 5, 7, 8, 9, 1, 3, 8, 7, 9. For example, we have this number. So what we do, we divide this number in 2 parts. For example, we have this one, so we divide this and in this way in 2 parts.
and we find the vinculum separately. How do we find the vinculum? Same method. 10 minus 9 is 1, so 1 bar. 9 minus 7 is 2, 2 bar. 9 minus 8 is 1, 1 bar. See, 1, 3. Now next number is 3. It is less than 5. So what we do? We do not take its vinculum. We just subtract 1 from it. So we have 3 minus 1 is 2 and write 1. So what I want to say that if the digits are 5 or more, then we take the vinculum. If the digits are less than 5, we do not take the vinculum. Again, we take the vinculum of this part. 10 minus 9 is 1. So this is 1 bar. 9 minus 8 is 1. This is 1 bar. 9 minus 7 is 2. This is 2 bar. 9 minus 5 is 4. 4 bar. And we subtract 1 from it. So it is 1. So this is the way of finding the vinculum, which is very useful for divisibility. Now, what is the method of finding anti-vinculum? Means you want to convert a vinculum number to the original. Let us see. Same method. If you have this number, again, all from 9, last from 10, and you add now. Last time we were subtracting 1 from the most significant. Here we add. Let us convert again. 10 minus 1 is 9. 9 minus 2 is 7. 9 minus 1 is 8. 9 and this is 2. So we add 1 to this. This is 3 and 1. You can see both the numbers are same. Okay. So in this way, we can convert a vinculum number to the normal number. Similarly, come to this. 10 minus 1 is 9. 9 minus 1 is 8. 9 minus 2 is 7. 9 minus 4 is 5. And we add 1 to the most significant. This is 2. And you can see both numbers are same. So in this way, we can find vinculum and convert a vinculum number into the normal number. Any doubt? Okay, so let us move to the divisibility. First method here is known as Dvajank. In normal division, you know that we have this type of pattern. Here we write dividend. Here we have divisor. Here quotient. And then here we can have a remainder. This is the way of normal division, but in Vedic mathematics, how do we write it? Here we write dividend. Here divisor. And here quotient and here remainder. So this is the way of writing divisibility in Vedic mathematics. Shall I clear this? Let us take few questions. If suppose question is divide 7153 by 6. I am taking simple one, then we will take difficult one. So you first write in Vedic mathematics the same pattern, 75313 and divided by 6. Okay. Then you draw a line. The first number, first digit is 7. When you divide 7 by 6, 6 ones are 6, remainder is 1. So we write 1 here, the quotient, and remainder here. 7 minus 6, this is remainder 1. Okay, so we write remainder. Now this is 11. So when you divide 11 by 6, 6 ones are 6 again. So you have 6 ones are 6. And what is the remainder? 5. We write here 5. Now this is 55. If you divide 55 by 6, so it is 9s are. So we have 54, remainder is 1. 6 9s are 54, remainder is 1. So we have 1. This is 13 now. When you divide 13 by 6, it is 6 2s are 12. So this is 1. So 6 2s are, so remainder is 1. So this is your quotient. This is your remainder. Okay. But this is not very useful method
Because here also we are using tables. If I do not learn the tables of all the numbers, then how can I perform this, right? So this is the drawback of this. Although this is the easiest method, but this is not applicable to all numbers. If the numbers are larger, suppose I say that you divide by 685, we cannot learn the table of 685, right? So we have other methods which are shortcuts using Vedic mathematics. Shall I explain this? So this method is known as Nikhilum. I think you are familiar with this Nikhilum in Vedic mathematics. This is the first sutra, and this is all from 9 and last from 10. So if suppose I have a number, say 278,954, how do we find the Nikhilum of this? You subtract all from 9 and last from 10. So this is 10 minus 4 is 6, 9 minus 5 is 4, 9 minus 9 is 0, 9 minus 8 is 1, 9 minus 7 is 2, 9 minus 2 is 7. So this is the Nikhilum of this number. This is Nikhilum. Okay. One thing more I want to mention here, that if in Vedic mathematics, we take base as powers of 10 because the powers of 10 are easier to handle. So here the bases are 10, 10 square, which is 100, 10 cube, 1000, 10, 4, and so on. So these are the bases. So bases are very important. When the number is near to the base, then obviously we subtract that number from the base. For example, I consider a number 98. For this, we subtract 100 minus 98. This is 2. But if suppose I have 104, if I subtract this from 100, this is going to be minus 4, which is 4 bar. Okay. So base is very important in Vedic mathematics, and this thing we are going to make use in divisibility. This method is very simple and applicable to all the numbers. Now, for example, if you have that you divide 10205 by 88. Using the previous method, Dvajang, it was not easy to divide any number by 88 directly, right? So what we do, this number 88, this is closer to 100. So here we treat base as 100. Base is 100. And how many zeros are there? 2 zeros in the base. So zeros very important, zeros play very important role in Vedic mathematics. So you need to count the zeros. In 100 we have 2 zeros, 1000 we have 3 zeros, and so on. So if you divide this, see, this is 20, it means the remainder will be 2-digit number. This is the first thing. 100 has 2 zeros, so the remainder will be 2-digit number. If it is not 2-digit number, then we place a 0 before the number. If suppose in the remainder I get 7, 7 won't do, it will be 07. If suppose the base is 1000, and if I get a single digit number in the remainder, for example 2, so 1000 has 3 zeros, so remainder would be 002. Okay, so we write this number 05. Since base has 2 zeros, 100, so we put a slash after 2 numbers starting from right to left. Okay, then we write 88 here. Now, this 88, if it's subtracted from 100, base is 100, so 100 minus 88, this is 12. This 12 is known as modified divisor. In short form, we write this MD, modified divisor. We write this 12 here. You please see carefully. If you won't understand, please ask me. This is useful method. Now, first number, whatever is this first number, you write this as it is. This is 1, we write it here. Okay. Then we keep on multiplying this quotient number with this modified divisor. 1 into, and digit wise, not 12 into 1. This is 1 into 1 is 1. 1 2 is 2. In this way we write. You write 1 2 with this 1. 1 into 1, 1 2 is 2, like this, separately. Now 0 plus 1 is 1. So this is the next quotient number.
0 plus 1 is 1. We write it here. Again, we have 1. So 1 ones are 1, 1 twos are 2. So now add 2 plus 2 plus 1 is 5. This is 5. Okay. Now we put a slash because now next is slash before below slash. Now 5 is the next number. Again, 5 ones are 5. We write, and 5 2 does 10. You write 10 here. Okay. Now add. Since we have reached to the last number, we stop here. So 10 plus 5 is 15. 5 plus 2 is 7. But here there is a twist. I told you the remainder should have only 2-digit number, but here the remainder we are getting 3-digit number. So what we do, we carry over this and add this to the next. So this is 85. 7 plus 1, whatever is this number, you add it here. 7 plus 1 is 8. So this is quotient and this is your remainder. Let me take another example. Any doubt? See, we have this number 10205 and we want to divide it by 88. Okay. This 88 is near 100, so base is 100. We subtract from 100, so we are getting 12. This is your MD, the modified divisor. So we write 12 here. And we put a slash after 2 digits, starting from right to left. Then you write first number as it is. It is 1, 1, 2, 2, whatever is this number, you write as it is. Then you multiply this number with these, but digit wise. 1 into 1 is 1, 1 2s are 2. Then you add 0 plus 1 is 1. Again, 1 is the next quotient number. 1 into 1, 1 2s are 2. Add 2 plus 2 plus 4 plus 1, 5. 5. Put a slash after this. Then 5 you multiply, 5 ones are 5, 5 twos are 10. Then add, because we have reached to the last, so 10 plus 5 is 15, 5 plus 2 is 7. But since base has two zeros, so remainder should have only 2 digits. Here we have 3. So we take this one as the carryover and add here. So this is 85. This is 115 is the quotient, 85 is the remainder. Right? Let us take a larger number. If suppose I say that you divide 131432 by 899. So what is the base for this? 899? 1000, right? So base is 1000. And we subtract 899 out of it. So what is this? This is 101. So this is modified divisor. This is 131432. And we want to divide by 899. Modified divisor is 101. How many zeros are there? 3 zeros in the base. So starting from right to left, we count 3. This is 1, 2, 3. So we put a slash for the remainder here. Okay. Let us proceed. First number as it is, this is 1. Multiply 1 with this 101. So 1 into 1 is 1, 1001. 3 plus 1 is 4, so we add 4. Next quotient digit is 4, so we multiply 4 with this. 4 ones are 4, 4 into 0, 4 ones are 4. Okay, then add 4 plus 1 is 5. We put a slash for the remainder. Next digit is 5, so 5 ones are 5, 5 0, 5 ones are 5. We stop because we have reached to the last digit. Okay, so this is 5 plus 1, 10, 4 plus 3, 7, 5 to 7. But how many zeros are there in the base? 3. But here we are getting 4 numbers. So we carry over this and add here. So this is 146 and this is 077. This is quotient, this is remainder. Okay. Okay, one more thing. Here this 077 is there and we have taken over next to the next. So we add this modified divisor here, add 101.
So remainder is basically up 871. 178 is the remainder. Because reason is after shifting this one, we are getting 077, right? Which is less than this 101. So that is why we are adding this 101. Always we do not add. Now again, there is a problem here. If you have suppose divide any number by 99, okay, 99 is closer to 100. So what is the modified divisor? Not 1, it is 01. So another thing I want to tell you here, that 0 plays very important role in Vedic mathematics. So for example, if you have that you divide 1322 by 99. 99 is closer to 100, so base is 100. 100 minus 99, it is 01, not 1. Why 01? Because base has 2 zeros. Okay, so the modified divisors should have the same number of digits, same as the base. This is very important. So now divide 1322 by 99. Modified divisor is 01. So base has 2 zeros. So again you count 2, 2, put a slash here. Let us start. First number as it is 1. Then 0, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1. 3 plus 0 is 3. Put a slash. 3 into 0 is 0, 3 ones are 3. 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5. So this is the answer. 13 is the quotient and 35 is the remainder. So 0 plays very important role. You cannot neglect 0, because if you neglect 0, what would happen? 1 is there. So when you multiply by 1, this 1 would shift to here. It won't give you a correct answer. Now similarly, if suppose I take you have that you divide 47578 by 998. Okay, 998 is closer to 1000. So we have 1000 minus 998. So what is the modified divisor? You tell me now. 002. Not 2 only, it is 002 because it has 3 zeros. So modified divisor should have 3 digits. Okay, so this is 002. Let us start. And it has 3 zeros, so we put a slash here for remainder. So first digit as it is 4. Multiply 4 into 0 is 0, 4 into 0 is 0, 4 2s are 8. So 7 plus 0 is 7. We put a slash. Multiply by 7. 7 into 0, 7 into 0, 7 2s are 14. Now add 14 plus 8, 22. 8 plus 7, 15 and 5. Is it the correct answer? Remainder? No, because the remainder should have only 3 digits. So what should we do? We consider this as the carryover. So this is 2. 5, 15 plus 2 is 17. So 7. 5 plus 1 is 6. 672. So this is your quotient. This is your remainder. Okay. Now, in all these questions, I have taken the divisor less than the base, but it is not always possible the divisor is always less than the base. What happens if the base divisor is more than the base? Okay, there we shall use vinculum or the Rekhank method. If suppose you have that you divide 231873 by 9818. Okay, I will do this using 4 methods parallelly, which I have already told you. See, if you just observe here, the digits are more than 5. 8, 7 here,
988 here. Okay. So here we can use the concept of vinculum, because if you find modified divisor also, this is large. So that is why I will perform this division the same using 4 methods, and you will wonder that the answers would come out to be the same. So the first is, we have this 231873. So what is the base in this case? 10,000. 10,000 would have 4 zeros. So we have this 9818. If it subtract from 10,000, 9818, so it is coming out to be 2, 8, 9 minus 1, 9 minus 1. Okay, so it is 0 also because it has 4 zeros. You cannot neglect 0. So this is modified 0182. Let us start. And it has 4 zeros. So we put a slash here after 4 numbers, counting from right to left. First number as it is, 2 as it is. You multiply by 2. 2 into 0 is 2. 2 ones are 2. 2 eights are 16. So you write this together. 2 twos are 4. 3 plus 0 is 3. So this is the next quotient number. Put a slash and multiply by 3. 3 0 3. 3 ones are 3. 3 eights are 24. 3 twos are 6. We stop because we have reached to the last. Now, one thing more I want to mention is, suppose you want to find out with decimal, answer in decimals. So you put 0 zeros after this, 0 0 0, and you proceed in the same way. And after 3, you put a decimal. That's it. Okay. Now, if we again add, 2 plus 1 is 3, 16 plus 8, 24 plus 3, 27, 24 plus 4, 28 plus 7, 35, and 6 plus 3, 9. But this is not the answer, right? So this is 9. Next is 5. 27 plus 3 is 30. So we put a 0, and 3 plus 3 is 6. So this is your quotient and this is your remainder. Okay. But here you can see that we are getting double digits, right? Because of these double digits, we have to take carryover. And if you just want to remove these carryovers, you will get direct answer. You want direct answer. So what should we do? So this is the second method which I am telling you. This is your first method. The second method, the same question. Now for this, we will find out vinculum of this number. See, this is 231873. We identify the digits which are more than 5. More than 5 numbers are, digits are these, 8 and 7. Let us start finding the vinculum. What is the vinculum? 3 as it is because it is less than 5. 10 minus 7 is 3, so we put a bar. 9 minus 8 is 1, we put a bar. And we subtract 1 to the next. So 1 minus 1 is 0, this is 0, 3, 2, because these numbers are less than 5. So this is the vinculum of this number. We will use this vinculum instead of 231873. In this case, you won't get the double digits. So it is 2, 3, 0, 1 bar, 3 bar, 3. And we divide it by 9818, and the modified divisor is 0182. Let us start again. The same method is same. We put a slash here. First number as it is 2. Again, 2 into 0 is 0. 2 into 1 is 2. 2 8s are 16. 2 2s are 4. We will get rid of this next method. 3 plus 0 is 3. Put a slash. Again, 3 into 0. 3 to 3. 3 8s are 24. 3 2s are 6. See, this bar means negative, right? So how do we calculate? 6 plus 3, 9. 24 plus 4, 28. 28 minus 3. Okay, this 3 bar means minus. So it is 25. We write here 25. 16 plus 3, 19. 19 minus 1 is 18. We write 18 and 2. So let us, there's some problem. This is 9, 5, 18 plus 2,
I made some mistake. Two, 3, 0, 1. Okay, there is a problem. Here, actually, when we convert, we should add 1 to this. This is 2 basically. उल्टा कर दिया. हाँ, एक हाँ, we add 1. और जब इसको reverse करते हैं तो we subtract. Sorry. So here this is 2. So 2 plus 2 is 4. Now, 18 plus 2 is 20, 0. 4 plus 2 is 6. So this is your quotient. This is your remainder. You can see both answers are same. Okay. Again, here we are getting 8, which is more than 5. So we can also take the vinculum of this number. So next method is using the vinculum of the modified divisor. Shall I erase this? So your number is 231873 and we want to divide it by 9818. So its modified divisor was 0182. But if we take its vinculum, again take the vinculum, 2 is less than 5, so we write 2 as it is. 10 minus 8 is 2, so we write 2 bar. Add 1 to this, so this is 2 and 0. So this is modified divisor of the modified divisor, MD of MD. Okay, so we write, and we have this is 231873. So this is 9818. Its modified divisor is 0182, and its new divisor is modified as this. Again, we put a slash because 10,000 is the base. Proceed in the same way. First number as it is 2. Then multiply. Now multiply with this new modified divisors, not with the old one. So 2 into 0 is 0. 2 2s are 4. 2 2s are 2 into 2 bar. This is negative number. Basically, this is 2 into minus 2, which is going to be minus 4. So 4 bar. Is it clear? So this is 2 into 2 bar is 4 bar. 2 into 2 is 2. So next number is 3 plus 0 is 3. Then again multiply. 3 into 0 is 0. 3 2s are 6. 3 2s are 6 bar. And 3 2s are 6. We stop here. So 6 plus 3 is 9. 7 plus 2, 9 minus 6 because it is 6 bar. So what is this? 3. 7 plus 2, 9. And this is 6 bar. मैं कहीं गलत किया. ओहो, 2 2s are 4. ये 4 है. Sorry. 4 bar नहीं 4. This is last one is 2. So 7 plus 4 is 11. 11 minus 6 is 5. 8 plus 6 is 14. 14 minus 4 is 10. So we write 10. And 4 plus 1 is 5. But again, we want 4-digit number. It is 5. So with this 1 can be treated as a carryover. So this is 9506. So this is your quotient. This is your remainder. We are getting the same answer. Okay. Now we have done number directly with the modified divisor. Then we took the vinculum and the modified divisor. Here we have taken modified divisor of the modified divisor and the number. But what is that next? It is vinculum with the vinculum of the modified divisor. Let us try this also. So if you divide this 231875 and its vinculum was, find the vinculum of this. This is 3. 10 minus 7 is 3. 9 minus 8 is 1. And we add 1. This is 2. Then 3 and 2. This was the vinculum. So we have this 2, 3, 2, 1 bar, 3 bar, 3. And we put a slash here. The divisor here is 9818 modified 1982 and it's modified this. Let us try this also, whether we are getting the same answer or not. First number as it is 2. Multiply with the modified divisor. 2 into 0 is 0. 2 2s are 4. 2 2s are 4 bar. And 2 2s are 4.
Next number is 3 plus 0 is 3. We put a slash. 3 into 0 is 0. 3 2s are 6. 3 2s are 6 bar. And 3 2s are 6. We stop. Now 6 plus 3 is 9. 6 bar plus 3 bar is 9 bar. 9 bar minus 4 is 5 bar. Put 5 bar. 4 bar plus 1 bar is 5 bar. 6 minus 5 is 1. Then 4 plus 2 is 6. But we are getting bar here. So you convert this into the normal number. So this is 9. 10 minus 5 is 5. And we subtract 1 to the next. It is 0 and 6. You can see this is quotient. This is remainder. Okay. So using all the 4 methods, we have got the same answer. You can use this as per your convenience. Now next is checking your answer, whether you are getting quotient and remainder same. I think you know division algorithm. Okay. Shall I erase? This is checking of answers using cross digit sum or bijunk. Are you familiar with bijunk? Bijunk ho gaya? Okay. So basically bijunk is that if you have a number, say 9878145, say 273. Okay. So what we do, we cross the numbers, either they are 9 or sum of 9s. So we have, this is 9, you just cross. Then 7 plus 2, you just cross, this is 9. 5 plus 4, this is also 9, you cross. 8 plus 1, 9, you cross. So what is left? This is 8, 7 and 3. 8 plus 7, it is 15 plus 3, 18. So we are getting 18 and find a single digit sum. 8 plus 1 is 9. So this is known as the bijunk. Okay. And 9 is equivalent to 0 because in this decimal number system, we have numbers from 0 to 9. So this is also equivalent to 0. Okay. How do we use in checking the answers of divisibility? We have division algorithm. What is this? This is dividend is equal to quotient into divisor plus remainder. This is the division algorithm. Excuse me, ma'am. Sorry to interrupt you. There is a request that just repeat or give some more examples of the your previous presentation. Means it was excellent. Actually, you have discussed 4 methods to find the division. So, ma'am, you can take more examples Using all 4 methods. Yeah, yeah. हाँ, कोई problem नहीं है. ठीक, okay. Okay. ठीक. Let me explain this, then I will repeat. No problems. Okay, we just did this question. This was 231873 divided by 918. So this is your dividend. This is your divisor. This is your dividend. This is your divisor. And quotient we obtained is 23 and remainder was 6059. Okay. So let us check the answer. Let us put everything in the division algorithm. So it is 231873 is equal to quotient. Quotient is 23 into divisor 9818 plus the remainder 6059. And we find the bijunk of each. I just explained you the bijunk. So we have 8 plus 1, 9, 0, 7 plus 2, 9. So 3 plus 3, the bijunk here is 6. Next number 2, 3.
So 2 plus 3 is 5, its Bijank is 5. Then 9 cancel, 8 plus 1, this cancels. So its Bijank is 8. Okay. Then plus, we have 9 cancels, 6 plus 5 is 11. 11 is 1 plus 1, 2. Its Bijank is 2. Right? And we perform the same operation here. 8 5s are 40 plus 2, 42. And what is the Bijank of this? Single digit, 6, and both are matching. So in this way, you can check the answer. Is it clear? Okay. As per the request that I should take more examples using the 4 methods, let me do it. You can give me any question. I will. 6059. 995. नहीं, वो तो ठीक है, but the answer is not coming. We are checking whatever we are getting. उस केस में नहीं हो सकता, इस केस में नहीं हो सकता, उस केस में नहीं एप्लीकेबल है. There are few drawbacks of this system. Okay. So let me give another example. For example, you have take any question. This is 248795. You divide this with the number, say 8279. Okay. Actually, this अभी ये थोड़ा उसको क्लोजर लेना पड़ेगा हमें बेस के. अभी वो मेथड मैंने आपको बताया नहीं है ना, जो क्लोजर ना हो तो कैसे करते हैं. Let me take something, say 9992. Next, I will explain if the number is not closer to base, then how do we perform the divisibility? Okay. So we have this 9992. This is closer to 10,000. So we have base as 10,000 minus 9992. So it is going to be 0008. This is the modified divisor. So we have this is 248795 divided by 9992. And modified divisor is 0008. So it has 4 digits. So we put a slash here for the remainder. First number as it is, this is 2. Multiply 2 into 0, 2 into 0, 2 into 0 is 0, 2 8s are 16. 4 plus 0 is 4. So we put a slash. Multiply 4 into 0 is 0, 4 into 0 is 0, 4 into 0 is 0. This is 32. So 32 plus 5 is 37. 16 plus 9 is 25. 7 and 8. So it has 4 zeros. So we need to carry over. This is 7. 25 plus 3 is 28. 7 plus 2 is 9 and 8. So this is your quotient. This is your remainder. This is the first method. Now let us find the vinculum of the dividend and then proceed and check whether the answer is same or not. This is 248795. So these are the digits which are more than 5. Let us take the vinculum. 10 minus 5 is 5, 5 bar. 9 minus 9 is 0, so 0 bar or 0. 9 minus 5 is 2, so this is 2 bar. 9 minus 8 is 1, 1 bar, and we add 1 to this. This is 5 and 2. So this is the vinculum of this number. This is 2, 5, 1 bar, 2 bar, 0, 5 bar. So it is 9992. This is 0008. Let us divide. Put a slash here. First number as it is. 2 into 0 is 0, 2 into 0 is 0, 2 into 0 is 0, 2 8s are 16. 5 plus 0 is 5, put a slash. 5 into 0 is 0, 0, 0. This is 40. Then 1 bar, it is 1 bar. This is 2 bar. And this is 16. 40 minus 5 is
35. We are not getting the same answer in this case. This is 5. 16 plus 3 is 19. So it is 9. 2 minus 1 is 1 bar and 1 bar. So if we take the complement of this is 10, complement means we convert it. So it is going to be 10 minus 5 is 5. We add 1 to this, subtract 1. So this is 8. Then again we start. This is 1 bar. 9 minus 1 is 10 minus 1 is 9. 9 minus 1 is 8. And we subtract 1 from here. So this is 24. This 5 is coming out to be different. I made a mistake. 10 minus 5 is 5. किया तो ठीक है 5 9 minus 9 is 0 9 minus 7 is 2 9 minus 8 is 1. Only this digit is coming out to be different. Must be 5 bar. So it is 45. 5 bar, so we have taken the vinculum na. So this is 10 minus 5 is 5 bar. All from 9, last from 10. This is 5 bar. नहीं ये तो ठीक है अभी मॉडिफाइड नहीं लिया हमने दिस इज मॉडिफाइड ओनली नॉट मॉडिफाइड ऑफ मॉडिफाइड वो भी करेंगे नेक्स्ट व्हाई वी आर गेटिंग डिफरेंस Nine minus 9 we have done in a correct way. We can check the answer. 35 I have written 35. This is 35, so this is 5. Except this 7, we are getting the same. That's 795. That's 795. We have done correctly. We need to check the answer. Let us try with the another. Then we can verify. Can you give me the number? I erase this. So the vinculum of this number was 10 minus 5 is 5. 9 minus 9 is 0. 9 minus 7 is 2. 9 minus 8 is 1 and add 1. So this is 5 and 2. And its modified divisor was 008. If we again take the modified divisor of this, it is coming out to be 10 minus 8 is 2 bar and add 1 to this, it is 1, 0, 0. This is modified divisor of the modified divisor. Let us try this. This is 2, 4, 8, 7, 9, 5 divided by 9992, 0008 and 0012 bar. Put a slash here. First, as it is, 2 into 0 is 0, 2 into 0 is 0, 2 ones are 2, 2 twos are 4 bar because it is 2 into minus 2. 4 plus 0 is 4. We put a slash. Then 4 into 0 is 0. 4 into 0. 4 ones are 4. 4 twos are 8 bar. Okay. So we have this 8 bar, 5. This is 3 bar.
4 minus 4 is 0. So it is 9. 7 plus 2 is 9 and 8. Okay. Let us convert this number. So 10 minus 7 is 10 minus 3 is 7. And we subtract 1. So 8, 9, 8. So it means this is the correct answer. First wala jo tha, it was correct answer. This is question, this is remainder. We are getting the same. So there is a calculation mistake in the previous one. Now the final method. In this we take vinculum with the vinculum. So it is 2, 5, 1 bar, 2 bar, 0, 5 bar. We divide this by 9992. Modified divisor is 008, 0012 bar. Put a slash. First number as it is, 2 into 0 is 0, 0, 2 ones are 2, 2 twos are 4 bar. Then 5 plus 1, 0 is 0. 5 into 0, 5 into 0, 5 ones are 5, 5 twos are 10 bar. Then again this is 1 bar, this is 2 bar, 0, and 10 minus this is 15 bar. Acha, okay. ठीक है. हाँ जी, हाँ ये 0 हो गया. 2 bar is 0. 5 minus 4 is 1. This is 1. Okay, so basically we are getting 1, 0, 1 and 15 bar. है ना? So this is 1 bar and we take it to the next. It is basically 1, 0, 0, 5 bar. Again, there is a problem with this method. When we take this vinculum, we are getting here in the end 5. But if we take in the normal, we are getting in the 7. So there is some problem with this. Practical application, see, I am explaining. So that is why I am taking more time. But directly if you do it, it takes less time than the usual method. Okay. After this lecture, I will explain you that you can do also research in this field. So what are the topics we can take for the research in Vedic mathematics? Okay, after completing all these methods. So these methods are useful, very, very useful in research. Okay. You give me any number. Only 500. Divide by? Divide by? Divide by 5 only. Divide by? Okay. 9 and 3? Okay. So base is 1000. Minus 993. It is 007. Modified divisor. So this is 235192. Base has 3 zeros. We put a slash and we divide by. This is 993. This is 007. Okay. So this is modified divisor which we have obtained after subtracting the divisor from the base. 007. As I told you, the number of digits in the modified divisor should be same as the number of zeros in the base. So first number as it is, this is 2. Then 2 into 0 is 0. 2 into 0 is 0. 2 sevens are 14. 3 plus 0 is 3. Okay. Multiply by 3. 3 into 0 is 0. 3 into 0, 21. 5 plus 0, this is 5. So we put a slash. Then we have
14 plus 5 into 0 is 0. 5 into 0, this is 35. Add 35 plus 2, 37. 21 plus 9 is 30. 14 plus 1 is 15. But here we have only 3 zeros, means remainder should have only 3 digits. So we take the carryover. This is 7. 30 plus 3 is 33. 15 plus 3 is 18. So this is your quotient. This is your remainder. क्या है? 1, हाँ, 1 sorry, 1 will be added to this. So this is 2 3 5. और एक और चीज भी कर सकते हो, you subtract 993 out of it, okay, and add 1 to it. दोनों एक ही बात है. So this becomes 236, and we subtract, it is 7 minus 3 is 4, 13 minus 9 is 4, and 17 minus 9 is 8. So we have, this is quotient and this is remainder. एक ही बात है. In fact, आपको यही ठीक, this is the right way, because we are getting more, so we subtract 1. This number, this 993 twos are, it won't go. Okay, so that is why we are doing this exercise. Now, next method, that if we take the vinculum of this 2 3 5 1 9 2, it has, see, 9 is more than 5 and this 5 is more than 5. So we have to take vinculum in 2 parts. We put a slash here. So 2 as it is, 10 minus 9 is 1, and we add 1 to it, it is 2. So 1 bar. Here also 10 minus 5 is 5, 5 bar, add 1 to this, 4 and 2. So vinculum of this number is 2, 4, 5 bar, 2, 1 bar, 2, and we divide by 993, which is 007. Put a slash here, proceed. First number as it is, 2 into 0, 2 into 0, 2 sevens are 14, 4. Then 4 into 0, 4 into 0, this is 28. Multiply. Then 5 bar, this is coming out to be 5 bar. Put a slash, multiply by 5. 5 into 0 is 0, 5 bar into 0 is 0, 5 bar into 7. This is 35 bar. Okay. Now, add 35 bar plus 2 means minus 35 plus 2 is 33 bar. Next is 28 minus 1 is 27. Next is 14 plus 2 is 16. Let us write, this is 33, so means 3 bar, 3 bar. So we have, this is 3 bar. 27 minus 3, right? Because this is carryover and this is 3 bar, so 24. So we write 4. And 16 plus 2, this is 18. But again, we are getting 3 bar here. So we convert this into the normal number. 10 minus 3 is 7. We subtract 1 from here. So this is 3 and 18. But again, we are getting more. So we subtract 993, which is coming out to be 844. So this is, again, you have to take here also. This is also bar. यहाँ फिर लेना पड़ेगा आपको vinculum. So 10 minus 5 is 5. And और इसका जो 1837 था ना, इसका भी एक ऐड करना पड़ेगा ना इधर. So this is plus 1 also. And we have to subtract 1. So this is 3, 2. So this is 236. This is your quotient and this is your remainder. Right? Now, as I told you, all these numbers are less than the base. But if it is more than the base, then what happens? क्या हुआ? So this is known as Parvata method. If the divisor is more than the base,
So what we do, as I told you that we subtract every number from the base. If suppose say 112 is there and we subtract it from 100, so basically we are getting a negative number minus 12, which is same as 1 bar, 2 bar. This is the only difference and we proceed as it is. So for example, you have that you divide 13621 by this 112. So this is the modified divisor. So this is 13621 and here we have divided by 112. So 1 bar, 2 bar is the modified divisor. We should not put a 0 before it because base is 100 and it has 2 digits, right? Do not put a 0. So we put a slash here because it has 2 zeros. So counting from right to left, proceed as usual. First number as it is, multiply 1 into 1 bar is 1 bar, 1 into 2 is 2 bar. 3 minus 1 bar, 3 minus 1 is 2. Okay, put a slash. 2 into 1 is 2 bar, 2 to the 4 bar. 6 minus 4, okay. 6 minus 4, 6 minus 4 is 2. Again, 2 into 2, 2 into 1 is 2 bar, 2 to the 4 bar. Now, 1 minus 4 is 3 bar. 4 bar, 2 bar is 6 bar, 4 bar. Very good, 4 bar. That's it. Now, both the digits, they are with bar. So what shall we do in this case? Basically, this is minus 43. Right? This is minus 43. So what shall we do? We will subtract this number from this 1112. So 112 minus 43. See, when in the remainder, we get all the digits with bar, with Rekhang. So we subtract this number from the divisor, 112. So this is 12 minus 3 is 9. 10 minus 4 is 6. So this is 69. So this is your remainder and this is your quotient. And one, you will have to subtract 1 from here also. So this is 1 to 1. This is your quotient. You want to ask something? Okay. हाँ, आप बताओ क्वेश्चन, आप बताओ, आंसर मैं दूंगी. Okay. Base is again 100 minus 108. So 8 bar, but 8 bar we write 0 bar 8 bar or 08. This is 08 bar. 23514 divided by 108, which is 08 bar. We have 2 zeros, so we put a slash before 2. First number as it is. 2 into 0 is 0. 2 into 8 bar is 16 bar. 3 plus 0 is 3. Then 3 into 0 is 0. 3 into 8 is 24 bar. Next is 16 bar into plus 5, which is 11 bar. 11 bar. Put a slash. 11 into 0 is 0. 11 into 8. See, these are two negative numbers we are multiplying. So it would be positive. So this is 88. So let us write the answer. 88 plus 4, 92. This is 92. 24 bar plus 1. This is 23 bar. So this is 2. 23 bar minus 9 means this is plus 9. So it is 13 minus 9, 14. So this is basically 14 bar. And we have this is 2. And see, this is also 1 bar we are heading. This is 1 bar. 3 minus 1 is 2. We have this type of thing.
So here we have 2 digits, right? Here we are getting 3. So first thing is this 1 bar, it would come here. So if it would come here, this is 2 into 2 and 1 bar plus 1 bar, it is 2 bar. And what is left here, it is 4 bar and 2. Okay. So what we do that when we convert a number into bar, we have to subtract something. So obviously we need to subtract something from here. But let us take first the normal number. When you convert this, 10 minus 2 is 8. We subtract 1. So this is 2. We are getting this. And here also, this is 2 as it is. 10 minus 4 is 6. And we subtract 1. So this is 217. So this is the quotient. This is the remainder. Okay. Any other question? रिमाइंडर आपने मतलब कैसे कन्वर्ट किया एक बार 4 bar. हाँ जी See, 2, I said that whenever the digits are more than or equal to 5, then we have to take vernaculum, right? So this 4 bar, this is negative number. When we convert this into a normal number, we subtract all from 9, last from 10. So 10 minus 4 is 6, right? और उससे जो पहले वाला होता है ना, उसमें एक कम कर देते हैं. उससे पहले वाला आपका है 218, तो 218 में से एक कम कर दिया तो 217 आ गया. Right? I think this is in. I want to proceed further for algebraic expressions. See, normally when we divide a polynomial with another polynomial, we adopt long division. Right? If suppose I say I have a polynomial of 7 degree divided by 5 degree, so you take a long division. But here, within 2 steps, you can divide one polynomial with the other using the same Parvata method or the Nicolam method. Let us proceed for that. So we have division of algebraic expressions. Very interesting this, because here we have so many shortcuts for this. Now, if suppose we have that you divide 8x cubed plus 3x square plus 2x plus 4 by x minus 2. Now, first thing is you have to write the coefficient of each term in the polynomial. If some term is missing, then you have to write 0. If suppose here x square term is missing, you put a 0. You cannot neglect. And you write this in the decreasing order, means highest order, next highest, and constant. In this way, you write only the coefficients. So write the coefficients of this. This is 8, 3, 2, 4. And then here we have this x minus 2, writes its coefficients also. This is 1 and minus 2. See, x is the highest power of the divisor. We just neglect it and take the opposite sign of this. This is minus 2, you take 2. If it is plus 2, then take minus 2. Why? Because if this is a factor, we put x minus 2 is equal to 0. So the value of x is 2. So that is why we take the opposite of this. Okay. And we proceed as usual. So here, this is first degree equation. So we put a slash only after 1. If it is second degree. We can say, ma'am, paravarta we are using. So we should transpose. Yes, we can say transpose. Yes. Okay. Okay. So this is your minus 2. So we put 2. Again, you proceed first number as it is. 8 to the 16. 16 plus 3, 19. 19 to the 38. 38 plus 2, 40. 40 to the 80, and this is 84. But here, we do not take carryovers. See, we are dividing x cube third degree equation with the first degree. So obviously it is x square term in the quotient. So we start writing the quotient. Quotient would be 8x square plus 19x plus 40.
and your remainder is 84. In this way we can divide. See how simple is this? Okay. Let me take few different methods, because here we have to take care of few facts while dividing one polynomial with the other. So the next is, shall I erase? Okay. See, first we write the coefficient of the given polynomial in the decreasing order. If some term is missing, we write a 0 for that coefficient. So here write the coefficients 8, 3, 2, 4. We want to divide by x minus 2. Its coefficients are 1 and minus 2. The first term we neglect and we write minus 2. So it is, take the opposite sign of this. Opposite sign means minus 2 to plus 2. If it is 2, then minus 2, opposite sign. So to proceed as usual, it is first degree equation, x minus 2. So we put a slash after one term. If it is a quadratic equation, you put a slash after two terms and so on. First number as it is 8. Then you multiply 8 with 2. This is 16. 16 plus 3 is 19. 19 2s are 38. 38 plus 2 is 40. 40 into 2 is 80. 80 plus this and so on. Okay. And this is cubic equation. You are dividing by a linear polynomial. So obviously the quotient would be in second degree equation. We start with the second degree equation. So it is 8x square plus 19x plus 40 and the remainder is 84. Clear? Now I suppose we have 3x4 minus x cube plus 4x minus 7. You divide it by x minus 1. Can you tell me the remainder? Sorry, the coefficients in the decreasing order? 3 minus 1, 0, 4 minus 7. Good. So it means you are understanding. So x minus 1, so you have 1 minus 1, so it is plus 1. Obviously, we put a slash here. Then, first number as it is, 3 ones are 3. 3 minus 1 is 2. 2 ones are 2. 2 plus 0, 2. 2 ones are 2. 4 plus 2, 6. 6 ones are 6 minus 1. It is a fourth degree equation and you are dividing by a linear polynomial. So answer would start from 3 degree equation. So it is 3x cube plus 2x square plus 2x plus 6. This is your quotient and remainder is minus 1. Right? Huh? Very simple. Yes, it is simple. Now, if suppose you have a 7th degree equation divided by a cubic equation. Huh? Okay, no problem. So if suppose you have x raised to the power 5 or 4x5 plus 6x square minus 2x plus 7 divided by 2x square plus x minus 3, for example. Okay. Okay. So we write the coefficients in the decreasing order. 4, 6, sorry, here this is x5. The x4 term is missing, cubic term is missing. So 0, 0, 6, minus 2, 7. And you here also write this is 2, 1, minus 3. There is a twist here. In the previous examples, the coefficients of the highest power of the divisor was 1, but here it is not 1. This method is applicable only if the coefficient is one of the highest degree of the divisor. So what should we do to make it 1? We will divide by half, multiply by half or divide by 2. So we multiply by half. So what exactly you are getting? 1 half minus 3 by 2. Now you have to take the opposite signs, leaving 1. So it is minus half and
3 by 2. Sorry, 1 by 2 and 3 by 2. Again, proceed in the same way. Now, this is a quadratic equation. So we put a slash here. We proceed. So first term as it is 4. 4 into minus half is minus 2. So this is minus 2. 3 by 2 into 4. It is 6. 0 minus 2 is minus 2, which is 2 bar in fact, or minus 2 because polynomial hai minus 2 we likh sakte ho. This is minus 2. Now you have minus 2. Half into minus 2 is 1. 3 by 2 into minus 2, minus 3. 6 plus 1 is 7. Then 7 into minus half, it minus 7 by 2 and 21 by 2. This is 6 minus 3 is 3. This is 3 minus 7 by 2. 6 minus 7, it is minus half. So this is minus half. Minus half into minus half, it's 1 by 4. This is minus 3 by 4. Again, you calculate. So this is 21 minus 2 plus 21 by 2 plus 1 by 4. 4 is the LCM. So it is minus 8 plus 42 plus 1. 43, 35 by 4. This is 35 by 4. Then we have 7 minus 3 by 4. This is 28 minus 3, which is 25 by 4. Okay. So what is the answer? This is a fifth degree equation. You want to divide by second degree. So answer would start from 3, 5 and 2. Fifth degree equation, you are dividing by second degree. So obviously x cube you will start. So this is 4x cube minus 2x square plus 7x minus half. And the remainder is, see, this was quadratic equation. The remainder should be less than that. So obviously this is a linear x in terms of f, 35 4x plus 25 by 4. This is the remainder. Okay, but sorry, here we have multiplied this by half. I forgot this. So here also you need to multiply by half if you have done. So this is your modified. So this is going to be, this is 2 minus 1, 7 by 2 minus 1 by 4. So quotient here will be 2x cube minus x square plus 7 by 2x minus 1 by 4. This is the question. Okay. So I think we conclude here. Actually, 4 or 5 methods are left, but because of paucity of time, I won't be able to take it. I hope you, thank you so much. I hope you understood the methods. Can you give me 1 minute? See, we have used this Bijank, crossing out 9 method or the cross digit set. See, Vedic mathematics and astrology, these are two related things. Okay. Using this Bijank or cross digit method, you can find out your lucky number or life path method. Let me explain you this in short, within 2 minutes. Give me 2 minutes only. This life path method is very important. And one thing more, you must have seen that sometimes people used to add some alphabet in their name. So there is a name number also and there is a life path number also. If there is no coordination between the two, then obviously you have to struggle in your life. So that is why people used to add alphabet so that there is a coordination between life path number and this. For example, see, I'm not writing my date of birth, it's general. So, stopped. It's not working. Okay.
Is suppose the date of birth is 8/8/1992. General I'm writing. Cross out nines. 9 9. 8 plus 1 9. 8 plus 1 9. It means your life path number is 2. 2 is governed by moon. So those who have this 2 number as life path number, they are calm in their life. I mean, शांत होते हैं वो लोग, और जो क्वालिटी चंद्रमा में होती है वो इनकी होती है. 1 is governed by sun and so on. So we have 1 to 9. Okay. And if there is a name number also, how do you calculate this name number? I'm giving you a table. Okay, I'm giving a simple example. Suppose I'm writing Ram Sharma, for example. If somebody is here with this name, please excuse me. See, how do we find this number? And suppose this is the date of birth of Ram. I'm just giving an example. No, not in public. बाद में discuss कर लेंगे. Ram, R is here. It means its number is 9. Take this 9. A is 1. M is 4. S is 1. H is 8. A is 1. R is 9. M is 4 and A is 1. So 9 cancels, 8 plus 1, 9 cancel, 9 cancel, 4 plus 4, 8 plus 1, 9 cancel. This is coming out to be 2. So a person whose date of birth is 18 September 1992 and name is Ram Sharma, it means he will get everything on a platter. Because these two by chance it happens. यहाँ by chance हो गया, otherwise ये नहीं होता. 2 and 2 both are coming out to be. इसका मतलब he is born with a silver spoon. Okay. So if they are not matching, either they are matching just like this example, or their sum is 9. It means whatever you expect in your life, definitely you are going to achieve it. I'm sorry, this was part of this. Thank you so much. एक मिनट और. Can you stop this recording? एक मिनट के लिए. I want to give an example of this. Once what happens that one person Thank you. मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर मुकेश सर को कि सर आए और सेशन को कंक्लूड करें. वेलकम सर. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. मैडम ने देखिए, अनुराधा जी ने जिस तरीके से विषय को रखा है और इनका अपना जो रिसर्च एरिया फिक्स पॉइंट थ्योरी पे मैम काम करती हैं ऑपरेटर्स के ऊपर, और ऑपरेटर्स से जिस तरीके से मैडम वैदिक मैथमेटिक्स की गणनाओं पे गई हैं और जिस तरीके से मैडम ने डिटेल में गणनाएं करके दिखाई हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं को लेकर के मैडम ने किस तरीके से सभी को बड़े विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया है, और इतना इंटरेक्टिव सेशन रहा है कि सभी लोगों ने काफी मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया है. और मैडम ने जो बाद में चीजें बताई हैं कि भाई देखिए, एक ऐसी नॉलेज मैडम ने, ज्ञान आप लोगों को दिया है कि आप अपने बारे में चीजों का पता लगा सकते हैं, और बहुत सिंपल साधारण तरीके में, इतने आसान तरीके से मैडम ने बताई है, इस विधि को मतलब प्रस्तुत किया है कि सभी के, मैं समझता हूं कि सभी के विषय मतलब संज्ञान में सभी को ये काफी समझ अच्छी तरीके से चीजें आ गई हैं. कि जो मैडम ने बताया कि 1 to 9 जिस तरीके से लिखना है और नाम है तो आदमी अपना पता लगा सकता है. तो मैडम मैं
अपनी तरफ से, गणित विभाग की तरफ से, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से मैडम ने विषय को प्रस्तुत किया है, हम सभी के लिए बहुत आसान तरीके से हम सबकी पूरी चीज समझ, मतलब एकदम समझ आ गई है। जितना भी मैडम ने किस तरीके से गणनाएं को, मतलब आपने, मतलब 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 अंक, 10 अंक, कितनी भी बड़ी संख्या है, उसके डिवीजन एल्गोरिथम को मैडम ने बहुत ही आसान तरीके से मतलब समझाया है, और सभी लोगों ने काफी इसमें हिस्सा लिया है, और सभी की समझ में काफी हद तक मैं समझता हूं कि आया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मैं आपका पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब मैं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिवराज सिंह जी को, डॉक्टर स्वरूप कुमारी को आमंत्रित करता हूं कि आए और मैडम को प्रतीक चिन्ह और किट देकर मैडम का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज का इतना इंटरेक्टिव सेशन रहा ये, इसके लिए हम थैंक्स कहना चाहेंगे डॉक्टर अनुराधा गुप्ता मैम को कि मैम ने बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन लिया और सच में बहुत इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव अबाउट वैदिक मैथमेटिक्स। एक्चुअली इट इज, ये विनिकुलम और ये सब जो आपने आज पढ़ा है, ये है वैदिक मैथमेटिक्स। ये आपने इसका ऐसा रूप देखा है कि जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि डिविजिबिलिटी कितनी, डिवीजन और डिविजिबिलिटी कितनी इजी बन जाती है। और इसी के साथ में अभी हम इस द्वितीय सत्र का खत्म करते हैं इसको, और लंच के लिए प्रस्थान करते हैं। तो हम मिलेंगे फिर से 2:30 बजे नेक्स्ट सेशन के लिए। थैंक यू।
कैमरा स्टार्ट। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में, वैदिक गणित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में के 5वें दिन के तीसरे सत्र में आज हमारे मुख्य वक्ता होंगे डॉक्टर एन उदय किरण। इस सत्र की अध्यक्षता के लिए डॉक्टर निधि हांडा मैम हमारे साथ में उपस्थित हैं। So now I would like to introduce Uday sir. Uday sir, are you hearing us? Hello, ma'am. Yes. Good afternoon. Am I audible? Nice to see you, sir. Good afternoon, ma'am. Welcome to the workshop. Welcome. Thank you. Thank you for the invitation. Department of Mathematics from CCS University of Meerut. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. So now I would like to introduce Mr. Uday Kiran, sir. He is an Associate Professor, Department of Mathematics and Computer Science, Shri Satya Sai Institute of Higher Learning. एक मिनट, wait for a moment. Yes, he is an Associate Professor, Department of Mathematics and Computer Science, Shri Satya Sai Institute of Higher Learning. And his research area of interest, micro local analysis, hyperbolic operators, enumerative number theory, image processing. Actually, he is not related to Vedic mathematics, but even though he is working with these parameters, so that's why we have introduced this this kind of a speaker. Actually, his list of publication is based on an algebraic approach to Q partial fractions and Sylvester denumerations. The Ramanujan Journal has been accepted this paper. It is the extension of Paravarta Yojyate Sutra, and the topic of the talk of today is philosophy of Paravarta Yojyate. So I would like to invite Dr. Nidhi Handa ma'am, if she has joined us. Ma'am, are you hearing us? निधि हांडा मैम आज इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। निधि हांडा मैम गुरुकुल कांगड़ी नहीं, we are still waiting for Nidhi Handa ma'am to join us. Okay, on the parallel, we can conclude the technical competence of sir. He has worked with MATLAB, Visual Studio, C programming, Python programming, LaTeX, GeoGebra. He has 16 years teaching experience at university level. He has taught many type of students like BSc, MSc, MTech students. He has taught measure theory, advanced algebra, category theory, linear transformation, differential geometry, complex analysis. By passion, he taught Vedic mathematics actually. So his research area are maybe different, but his passion to study Vedic mathematics is also there. So we would like to introduce Uday Kiran sir. Okay sir, हम अभी वेट नहीं कर रहे हैं मैम का, मे बी मैम नहीं आ गई है मैम. ओके, निधि हांडा मैम has joined us. Actually, thank you ma'am. Thank you. Unmuted था. I would like to introduce Nidhi Handa ma'am. Dr. Nidhi Handa ma'am गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और मैम का जो टॉपिक, जो मैम जिस फील्ड में काम करती हैं वो मैथमेटिक्स के साथ में वैदिक मैथमेटिक्स भी है. तो मैम इज एक्सटर्नल गाइड ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स ऑल्सो. Therefore, we have suggested to ma'am that must chair this session. Please welcome ma'am. Over to you, ma'am. You would like to say something?
यस यस, मैं आपको सुन पा रही हूँ. थैंक यू सोनिया. थैंक यू मैम. वी वेलकम श्री उदय किरण जी. नमस्कार. आप अभी सोनिया ने आपके बारे में बताया. आप श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट आंध्र प्रदेश में आप कार्यरत हैं और आपके बहुत सारे वेरियस इंटरेस्ट की बात करी. आप कोऑर्डिनेटर ऑफ एंशिएंट मैथमेटिकल स्टडीज अपने इंस्टीट्यूट में आप एज ए कोऑर्डिनेटर भी आप कार्यरत हैं. तो आपको हम सुनने के लिए बहुत इस समय ईगर हैं. आप शुरू करिए. आप पारवार्थ्य सूत्र पे कुछ आपका फिलोसॉफिकल वर्क है. आप अपना व्याख्यान स्टार्ट करिए. Thank you, ma'am. Thank you to introduce Uday Kiran sir. Now, sir, over to you. Most welcome, sir. Am I audible? Yes, sir. Is the screen seen? Yes. I'm sharing the screen. You are audible and visible your screen. Okay. Okay. Om Shri Guru Bhyo Namaha. So at the outset, let me thank the university coordinators of the conference, Handa ma'am and Sonia ma'am, and Dr. Sriram sir, who has actually personally invited me. Thank you all for this beautiful opportunity. I could hear few talks, not all because of other commitments, but I'm definitely enjoying the sessions. And whenever possible, I'm also seeing in the YouTube the recorded sessions. So you're doing such a wonderful job. Thank you for the good coordination and organization. Okay, I would like to tell about myself briefly. First of all, forgive me, I'm not speaking in Hindi, though I would like to discuss my Hindi itna swachh nahi hai, shuddh nahi hai. So I will speak in English. And problem, sir. Not at all. You can speak in English. Okay, There's no problem. Thank you. Okay, so to be very frank with all of you, I'm not definitely not a Sanskrit scholar, not a scholar in ancient Indian mathematics, not well versed in all the sutras of Sri Bharati Krishna Tirthaji Maharaj. Although I am a mathematician who is curious about Indian philosophy, I am coming from a place which is in some sense a hallowed place for spirituality. So that actually draws me to the Bharatiya Samskriti and Indian philosophy. Although I have done a small piece of work in number theory relating to Paravartya Sutra. And that's exactly what I want to share. That paper is also published in the Ramanujam journal. So I want to discuss the philosophy behind it and actual practical implementation of that. So the structure of my presentation will be, broadly speaking, in three parts. The first part would be discussing the philosophy of Paravartya Sutra. Second would be an implementation of this sutra. And third would be understanding the mathematics behind. As one of the preceding speakers on the first day, Professor James put it, without understanding the mathematics of the methodology and procedure, the sutra is not complete. And in that sense, I also would like to put the mathematics behind. And of course, I will not go deep into it, but you will realize that there is a lot of deep mathematics. And those who are pursuing Indian mathematics and Vedic mathematics, you are doing great service to the nation. And by bringing out a lot of our treasure. In the philosophy of Paravartya Sutra, you should look out for one particular slide, which will be the main slide.
I will title the slide as the philosophy. And in the implementation of the sutra to higher degree polynomials, such a work is not done before. In the book, the beautiful book Vedic Mathematics, Swamiji has written for the linear and powers of linear case. I have taken inspiration from that book and then extended this to higher mathematics. Now, I should also tell you the background. As a school student, I was very much intrigued by the book of Swamiji, and I used to do a lot of some so-called shortcuts and the mental gymnastics associated with these calculations. And always the kind of speed with which we do, and the kind of rigor that brings in, and also the kind of beauty of mathematics that is brought out is something which has intrigued me a lot. By God's grace, I went on to do a PhD in mathematics, and I learned some significant amount of modern mathematics. Later, when I started looking at these sutras, then I realized that the sutra my best, and then it turned out to be a success. And I want to share that success story also with you. So the principle of Paravartya Sutra mainly is used for arriving at efficient methods for division, remainder, and partial fractions. So the objective of my talk will be discussing an application of Paravartya Sutra for higher degree polynomials and bringing out the mathematics behind. So the contribution of the presentation would be extending the shortcuts for higher degree polynomials, building a theory based on the branch of mathematics called commutative algebra. So if you actually sit with the book of Vedic mathematics and then try to unearth what exactly is the key point in that book, one glaring feature, one significant feature that comes is many problems which are arithmetic problems are converted to algebra problems. And once we have algebra, a lot of power can be harnessed through the identities of algebra. And once we have the identities which give us a simplification, we get one-line mental shortcuts for arithmetic operations. And this is the principal point on which Swamiji has developed these 16 sutras, and they give you, as Professor James also put it, the mental efficiency, the way we think about mathematics are encoded in these sutras. Paravartya Sutra is a beautiful example to illustrate the interplay between arithmetic and algebra. So one of the key points is we have a number, and the notation and the symbolic computations Swamiji has given us actually make us understand that the number indeed can be treated as a straightforward polynomial. Now that is actually not true if you take a number in general. For example, if I take the number 18, I have 1 and 8, it is 10 plus 8. But if you take a general polynomial, it is something like ax plus b, where a and b are not necessarily positive numbers. Now, to address that, a very interesting notation is created in the book. It is called the vinculum notation, and also Paravartya division. So to get started, I will discuss these two on the screen. Okay, can you see the screen? Yeah, so if I take 18, 18 is 20 minus 2. So 20 minus 2 is 2 into 10,
minus 2, which is written as 2 bar. So this gives us a lot of efficiency. In the first place, if you have digits greater than 5, they can be reduced to less than or equal to 5. Second is, you also have the concept of negative number. Excuse me, Sonia ma'am, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Screen is clear, right? Okay, so this is about the vinculum notation. And if you take the number, so I took 432 dividing divisible by 11, dividing 432 by 11. So the idea behind Paravartya Sutra is, first of all, you should take the number, the decimal number, a power of 10, which is close to the number. So in this case, it is 10. So if it is 10, then we draw a line here. And then because it is 10, we take the 1 digit as a possible reminder. We can also have 2-digit number as a reminder. Then what we do is, we take this 11 and the last digit. So this becomes 10 plus 1, and we take the plus 1 as 1 bar, as -1, and that is basically the transposition, which I will explain later. I'm sure some of you are very familiar with this. I'm just doing it for the sake of some recalling. So first we write the 4 as it is. Then we multiply the 4 with 1 bar to get 4 bar. And then when we add, we get 1 bar. And then 1 bar again is multiplied with 1 bar and we get 1. -1 into -1 is 1. So I get 3. So we notice that we have 4 1 bar as a quotient. Bar in turn can be thought of as 4 into 10 minus 1, which is 39. So when we divide 432 by 11, we get quotient as 39 and remainder as 3. So essentially this is Paravartya Sutra, and we notice that we are able to play with numbers because we are also able to consider positive as well as negative numbers. So therefore, we are able to get a polynomial view of a number, or in other words, we are able to convert the arithmetic number problem to that of a polynomial like problem. Therefore, I will focus in this presentation only on polynomial arithmetic. I will not go into numbers. So Paravartya Sutra starts off with this remainder theorem. If you go to the book of Swamiji, it will start with remainder theorem, where I am dividing a polynomial f of x by another polynomial x minus a. What we do is, in remainder theorem, the remainder is simply substituting x is equal to a in f. That is the remainder, which basically is, I have an equation setting x minus a equal to 0 and take the a to the right hand side. Or in other words, I'm transposing the rest of the terms to right hand side with, if there is a negative sign, it becomes positive. If there is positive, it becomes negative. If there is multiplication, it becomes division. Division becomes multiplication, so on. So we transpose the sign of a in x minus a from minus to plus and then substitute it into f. So in some sense, we can call this method as transform and conquer. Transpose the divisor and apply a substitution. So I take x minus a, transpose it to plus a,
and then substitute it into f of x. So let us actually do this for polynomials. So if I want to determine the remainder of the polynomial, let's say x square plus 4x plus 1 when divided by x minus 1, what we do is transpose x minus 1 to the higher order term is kept aside, and the lower order terms we always take with negative sign. So transpose it as x going to 1, and then make a substitution x is equal to 1 in the whole expression. We will actually get, in place of x square, 1 square plus 4 into 1 plus 1, 6. 6 is the remainder. And if we take a slightly difficult problem, let us say x cube plus 1, and then we want to determine the remainder when divided by x square minus x plus 1. Then we transpose the problem and we get x square as, it's as good as saying I have set x square minus x plus 1 is equal to 0, and then x square becomes x minus 1. Then I have to substitute x minus 1 into x cube and then do a simplification. That is basically the strategy applied. So let me just do this. Let me do the calculation. So I'm having x cube minus 1, and then I want to know the remainder when I divide x cube minus 1 or plus 1. I took plus 1. X cube plus 1 minus x plus 1. So x square has to be substituted by x minus 1. So when I take x cube my plus 1, I write it as x into x square plus 1. But what is x square? By this substitution rule, I will have x times x minus 1 plus 1. So I'm having x square minus x plus 1. But what is x square in turn? X square is x minus 1. X minus x cancel, minus 1 plus 1 cancel. Therefore, we know that x cube plus 1 when divided by x square minus x plus 1 gives a remainder 0. All the terms got cancelled and we got 0, which is a well-known fact. We know that x cube plus 1 factors as x plus 1 into x square minus x plus 1. So this is basically the substitution rule. If anybody has any doubt or query on this, we can right away discuss. Sir, after your presentation, we will have a queries round. Okay, thank you. Okay, so in the page number 53 of Vedic mathematics book, there is a clear statement about the transposition rule. So Swamiji says plus becomes minus, multiplication becomes division, and conversely. The main statement I want you to focus on is the last sentence, which says, according to the Vedic system, however, it has a number of applications, one of which is discussed in the present chapter. So that actually gives us a good scope in thinking that Swamiji, who was the inventor of some of these ideas, believed that there is a lot more scope and lot more applications. And I think the newer generation, the younger generation, if they go with that belief, I'm sure we can bring out our Indian mathematics, not just Vedic mathematics, but the ancient Indian mathematics into the fora. So let us actually do Paravartya Sutra for 1 by 1 minus x. So let me just do that. So this was actually discussed by Professor James in his presentation. So I'm doing 1 by 1 minus x. So I have to take 1 minus x. Whenever I have
polynomials of this form, here we take in a slightly different manner. When we want the infinite series, we transpose the system as 1 and x. So 1 by 1 minus x, 1 is treated as 1 plus 0 times x plus 0 times x square plus so on. And I have 1 minus x. So I'm having 1 plus 0x plus 0x square plus so on. When divided by 1 minus x, the transposed element is x. First we write 1 as it is. Then you multiply x with 1, we get x. 0x plus x is a plus x. Then x into x, x square plus x square. X into x square, x cube. So we have plus x cube, so on. So we have on division of 1 by 1 minus x, we have 1 plus x square plus so on, the infinite series, which is well known. We can derive it using the principle of Paravartya Sutra. So the idea here is we should not just confine ourselves to basic polynomials, but even infinite series can also be obtained, going by the belief system that Swamiji was saying, that there are a lot more applications that are possible. Okay, one of the main application of my interest is partial fraction decomposition. In algebra, a partial fraction decomposition of a rational polynomial is an operation that consists of expressing the fraction as a polynomial and sum of one or more rational polynomials. So for example, if I have a rational polynomial of the form f of x by p1x so on up to pkx, which can also be denoted like this, f of x into the product of n terms is summation fj of x by pj of x. This fj of x is actually a polynomial which has to be determined. That is the problem of partial fractions. In some sense, it is an inverse problem where you are given the product, you are trying to write it as a sum. It has a lot of applications in integration, complex analysis, number theory. So a simple partial fraction would look like this. 2x plus 5 by x plus 1, x minus 2, x minus 1 can be written in this form. Okay, how do we go about doing the partial fraction? What we say is, because x plus 1, x minus 1 all are linear, you should expect the numerator to have constant terms. We first write like this and then cross multiply and then substitute for some values of x to obtain a set of simultaneous equations in capital A, B, and C, and then solve for A, B, and C. That is the usual method which is taught in any NCERT textbook or any school textbooks. But Vedic mathematics has a very good shortcut, and this particular method is also known as cover-up method in the Western parlance. So the method is, now if I want to determine the partial fraction, first I want to determine for the first term a. I want to determine a. For that, what I do is I set x plus 1 is equal to 0 and then transpose it to get x is equal to minus 1. And then seemingly covering x plus 1, I should evaluate rest of the terms at x equal to minus 1. Substituting x equal to minus 1 in rest of the terms will give us half. So a will become half. Similarly, in order to get the constant b, we set the corresponding denominator x minus 2 to 0. We get x equal to 2 and evaluate the whole expression dropping x minus 2. Dropping that, we would get b is equal to another number. Similarly, we can set for c. So
we will get A, B, C in such a straightforward manner. And all of this can be done at a mental level in one line. And that's basically the shortcut. And it's a very beautiful shortcut, which actually kept me captivated in my school days. And I always wondered, okay, how do I get for harder problems? Because as all of you are aware, the world is competitive, and in 11th, 12th, child is put to a lot of competition about working out harder problems with higher powers or more complicated expressions, right? For example, the integral of 1 by 1 plus x power 4, doing that in a interesting manner with symmetries is one interesting problem. So like this, people expect a lot from a schoolboy, and that was what was going on in my mind. And in order to actually understand that, few years back, I went back to this principle of transposition, and then I realized there is a substitution principle in that. So basically, Paravartya Sutra basically means, Paravartya means transpose, and apply. Paravartya Yojyate means transpose and apply. What is the transposition? Now, given a polynomial of this form, ck x power k plus ck minus 1 x power k minus 1 up to c0, transposing this means I substitute for x power k with setting this to 0. So all the lower order terms go that side with negative signs, and the ck term comes with a 1 by ck. So thus, by the Paravartya Sutra, we substitute the right hand side of 2 for x power k. Wherever x power k is there, we substitute this expression, which is a smaller degree polynomial. So that becomes the basic principle of substitution. So we can use this principle to obtain generalized remainders. For example, I want to know the remainder of this third degree cubic polynomial when divided by x square minus 1. So the idea here is we transpose x square minus 1 as x square going to 2, and wherever we have x square, we replace that with 2. So thus, in order to obtain the remainder, we replace 2 for x square in that polynomial. So if we have x cube plus 3x square plus 1, I can think of x cube as x square into x, 3x square plus 1. Wherever x square is there, blindly we can substitute 2. And simplifying, we get 2x plus 7. So therefore, the remainder is 2x plus 7. So this can be thought of as a generalized remainder theorem. There is also a paper published by one Italian person in a maths education journal on that result. So what is the philosophy of Paravartya Sutra? So basically, the philosophy I understood is, if I have a complicated expression, I take some part of it and substitute, consider the whole expression as 0 and substitute the higher order term with the lower order terms. But the main philosophy there, what I felt is the key point, and using that philosophy, I found some interesting results, is you substitute it as it is. Don't try to simplify it further. Don't simplify the transposed expression. Nevertheless, you can perform the arithmetic operations considering the transposed expression as an atomic expression. So for example, I want to take remainder of x power 5 plus x square plus 4x plus 5 when divided by x square. What I do is I consider x power 5 as x square into x square into x. X square is x square itself, 4x plus 5. Wherever I have x square, I substitute with 0. And I will leave x as it is. So basically, that is the principle, that if x square is 0, don't simplify it as x equal to 0.
as Albert Einstein put it, try to make it simple but not simpler. X square is 0, but X is not 0. Nevertheless, if X square is 0, you can consider X cube as 0 or X power 4 as 0. So that, I believe, is the core philosophy on which the whole calculation can be done. And using this, let us do some basic calculations. So for example, I want to know the remainder of a big polynomial like this when divided by another polynomial x square plus x plus 1. Now, the sutra tells us that I have to replace x square with minus x minus 1. But that is a very hard thing to do, because in x power 101 and 5 times x power 31, I have to look for x square terms and then substitute. But if we observe that x square plus x plus 1 actually divides x cube minus 1, first we can substitute x cube by 1. Simplify the polynomial and then substitute the actual. So basically the idea we are using is, if a polynomial divides another polynomial, considering the other polynomial as a divisor, you can simplify the expression. So you can actually see that if you take x power 101 plus 5 times x power 31 remainder with this, first I can replace x power 3 by 1. So that reduces the complexity of the problem by that much order. So I have replaced 101 divided by 3 is 2, 31 divided by 3 is 1. So I have this. Now all that I have to do is replace x square with minus x minus 1. So I get the remainder as 4x minus 1. So one of the things we can learn here is we can apply the sutra in a modified form so that we can get our algorithms being very efficient. So you can actually reduce the problem's complexity from what it is of order n to that of a constant order. That is one very good way of deploying the sutra. Another point I want to discuss today, and this is the main point, is using Paravatya Sutra for partial fractions. Now, if you actually flip through the pages of Vedic mathematics book and other follow-up books, you will actually notice that only powers of linear factors are discussed. What if I have a complicated expression? That is not discussed. So I have extended that to a particular higher order case, and then I have also showed that in the restricted partition theory, it finds an interesting application. And that paper is actually published recently. So let me explain the principle through a simple problem, 1 by x square times 1 minus x. This is a simple problem. You can actually address this problem by other methods, but I want to show through substitution principle. So if I have 1 by x square times 1 minus x. Now, if you actually do by the standard partial fractions, this looks like ax plus b by x square plus c by 1 minus x. You can use the standard substitution rule for the 1 minus x, because x 1 minus x, you can treat it in the transposition x is equal to 1. Substituting x equal to 1 in rest of the terms, 1 by x square, you will get 1. So c is 1. This part is the easy part. What about ax plus b? For ax plus b, what you have to do is treat x square as 0. That's the substitution. Now, if I have to make this substitution, let me remind you that x square plus x square is substituted to 0 should not be simplified as x is substituted to 0. If we make this mistake, then we are stuck. So keeping that philosophy in mind, so I will erase this. Now,
if x square is 0, I have to evaluate rest of the expression 1 by 1 minus x. So how does that get simplified? The way we can simplify it is multiply and divide by 1 plus x and 1 plus x. So we'll have 1 plus x by 1 minus x into 1 plus x gives us 1 minus x square. But by the substitution rule, x square is 0. So this is 0. So it becomes 1. Hence the numerator is 1 plus x. So that's basically the application of Paravartya Sutra for the higher degree polynomials. So let me just repeat. For the 1 minus x case, it's a straightforward substitution, x is equal to 1. But for the x square case, you set x square equal to 0, but we should not make a mistake that x square equal to 0 implies x equal to 0. Keeping that in mind, we can simplify the expression as 1 by 1 minus x times 1 plus x by 1 plus x. And that gets simplified. This becomes 1 because of the substitution. And then I'll have 1 plus x, which is the answer. Okay. So that's basically the answer. So let me do this for a slightly more complicated example. Something like this. I want to find the partial fraction of 1 by x square plus a square x cube plus b cube, where a and b are strictly greater than 0. I want to find a partial fraction of this form, but we can always take x cube plus b cube, further factorize it, and then we can do further partial fractions. But I just want to consider only up to this level. So for this, what does Paravartya Sutra tell us, or the cover-up method tell us? It tells me that I have to suppress one factor and evaluate rest of the factor. So if I want to know a1 of x, I have to set x square plus a square as 0. Then I'll have x square going to minus a square and evaluate rest of the expression. But if I have to evaluate the rest of the expression, I don't want to do it just substituting. What I will do is I will try to get x power 6 here. If I get x power 6, if x square is minus a square, x power 6 is minus a power 6, because I have to take a cube of this. So in order to get that, I will do a basic calculation, that x cube plus b multiply and divide by x cube minus b. That gives me in the denominator x power 6 minus b power 6. And x power 6 is replaced with minus a square. So I will have, okay, so sorry for this typo. This factor will not be there. So remove this factor. We will have x power 6 minus b power 6. And here I'll have, in place of x cube, a cube, a square minus a square times a minus b cube. So I will have this expression. Similarly, we can also do for a2. A2 you will have to multiply and divide by another term, which I will show later. So basically, in one line, you can get a complicated partial fraction like this. And if you recall, by the standard textbook method, textbook as in the school textbook, the number of terms associated with x square plus a square will be 2 terms, x cube plus b cube will be 3 terms. So totally you will have to solve simultaneous equations with 5 constants, 5 arbitrary constants, and you have to set all those 5 arbitrary constants to specific values. And again, you have a and b. So the calculations become humongous, but you can actually see that the application of the substitution rule is simplifying the calculations. Further, if I can factorize x cube plus b cube as x plus b into x square minus b square x square, bx square plus b square. I can actually do that kind of simplification.
But that simplification, right now I'm not interested. I just wanted to show one such partial fraction. Okay, so now that we have done this partial fraction, let me just show you a slightly interesting aside of Paravartya Sutra. Now I will set A is equal to 1 and B is equal to 1. And when I'm determining the coefficient of x cube plus b cube, I will have a term like this. By the Paravartya division, I will have, I set A is equal to 1. So I have 1 by 1 plus x square, but x cube is minus 1 because 1 plus x cube, and that becomes minus 1. If I had used Paravartya division, I would have an expression like this: 1 minus x square plus x power 4 minus x power 6, so on. And then I need to substitute x cube by minus 1. You can notice that x power 6 becomes minus 1 power 2, which becomes 1. So you will have terms like this. When you actually collate the terms, you will get an expression like this. Some of you may recognize this. You have an alternating sequence: 1 minus 1 plus 1 minus 1, so on. Now, if I used a direct substitution rule instead of getting into the series, then I would have, by multiplying and dividing with 1 minus x square plus x power 4, I would have something like this: 1 minus x square plus x power 4 by 1 plus x power 6. Now substituting for x cube as minus 1, I will get, in the denominator I will have minus 1 power 2. I'll have 2 here. In the numerator, 1 and x square need not be substituted for, but x power 4 is x cube into x. So I will have, okay, I'm sorry. I will have x cube into x, which becomes minus x. So I can actually compare the terms by two different methods. I have 1 minus 1 plus 1, so on. And here I have half. If you compare the terms, you can actually arrive at this summation of a divergent series, which is well known in the literature. So I'm not doing anything. I'm just doing the substitution, and then I got this answer, which is generally people use Cicero summation or Riemann zeta function to prove these kind of results. Another simplification I'll do, instead of doing partial fraction with a and b being 1 and here power 1, I'll take power 2. And if I want to know the term associated with 1 plus x cube, cover-up method or the Paravartya Sutra in this context tells me that x cube should be substituted for minus 1 in this whole expression. And for simplification, I have to do a squaring. Okay, just you can actually do this later for yourself, but you can just observe this. When I do a squaring, the square terms, they get multiplied, and I'll have something like this. Similar expression as in the last slide, but with a square here. Now when I square it and then substitute for x equal to minus 1, I'll get something like this: 1 by 4 minus 1 minus x square minus 3x. Okay, forgive me for this clumsy way of writing. I wrote constant, square term, and then linear. Because it's coming in that order, I just wrote it like that. Now, if I do Paravartya division and get a series, I'll get something like this. The series will be 1 minus 2x square plus 3x power 4 minus 4x power 6. The calculation is tedious, but you will get this. And then substituting for x cube equal to minus 1, you will get, in place of x power 4, you should put minus x. In place of x square, you will put plus 1, so on. And then collating the terms, putting all the terms together, you will have something like this: 1 minus 4 plus 7, so on, and so on, x square, so on, x. Now you compare the terms. I'll just compare the last term. I have minus 3 by 4 is minus 3 plus 6 minus 9, so on. When you cancel the minus 3, you will get the divergent series 1 minus 2 plus 3 minus 4, so on, is 1 by 4. So my strong feeling is
the sutras, when they are applied in a much more refined manner, give us some interesting stuff. And that interesting stuff could be advanced, but you may be getting in simplified form. Just again, as a very interesting aside, our great Ramanujam in his notebook, in chapter 8, notebook 1, chapter 8, he has written the following series: 1 plus 2 plus 3, so on, is minus 1 by 12. And some of you know that this series is applied in astronomy, in different subjects, and string theory. In string theory, this particular equation comes in a textbook. Now, Ramanujam actually used, this is in Ramanujam's own writing. So you have C is equal to 1 plus 2 plus 3 plus so on. When I multiply C by 4, I'll get 4C as 4 plus 8 plus 12. What Ramanujam did was, below 2 he wrote 4, below 4 he wrote 8, so on, and then subtracted. Subtracted C minus 4C, you get minus 3C as 1 minus 2 plus 3 minus 4, so on, which is 1 by 4, what we have shown in the previous slide. So C is minus 1 by 12. So the idea is substitution principles can give us much more than what we meet in the eye. They are somewhere leading us to some interesting things. Okay, so just to discuss the mathematics behind. So the mathematics behind Paravartya Sutra is commutative algebra. Okay, just to put that in perspective, what I'm saying is, the sutra tells that take a polynomial and then transpose it. So you will have a higher order polynomial and then transpose it. So you will have something like a polynomial like x square plus x plus 1 becoming x square has to be substituted by minus x minus 1. So you are substituting a quadratic polynomial with lower order polynomials. Or in other words, you are setting the polynomial to 0. Is there a mathematical concept in the modern mathematics which addresses that? There is such a concept. It is called the quotienting, right? When I quotient a particular ring by another ideal, a maximal ideal, let's say a principal ideal, you're as good as simply substituting the polynomial to 0. So such a concept exists, and that subject is commutative algebra. And there are other two concepts called localization and p-adic completion. So those who have studied commutative algebra will know that these are very important concepts in that subject. And interestingly, when we want to look at the mathematics behind higher degree substitution, all these three things play a key role. Let me very quickly show you. I don't want to discuss this in detail. So suppose I want to know the remainder of the polynomial f of x when divided by p of x, we denote it as f of x rem p of x. And let us say this script p as the principal ideal. Then we can just denote it as one particular function. I can denote the remainder operator as composition of two functions. One function is, it takes the polynomial and simply gives f of x plus the ideal p. Then I would also like to look at another function eta, which takes the ideal plus f of x plus the ideal, and then from that it will pick up the smallest degree polynomial. Now it can be shown without very difficult calculation that remainder can be expressed as eta composition pi of p. Or in other words, what we are saying here is, by taking quotienting, we are setting wherever the occurrence of polynomial p comes, we are setting it to 0. Repeatedly, you keep setting it to 0 and then pick up the smallest degree polynomial. That polynomial will be the remainder, which is precisely what Paravartya Sutra is telling us. The idea of ring quotienting says that in order to obtain the remainder of f of x with p of x, one should repeatedly substitute 0 for p of x. Wherever p of x is there, replace it with 0. In the terms of f of x,
until we get the smallest degree polynomial. So essentially that is the idea of finding the remainder. But what about rational polynomials? Suppose I have p of x by q of x, what to do? In that context, we have the concept called localization and completion. I will just show you in 2 slides and then I will stop. So suppose I have r of x and s of x, and then I want to do a kind of quotienting, setting a of x to 0. Suppose s of x and a of x are relatively prime, then using the GCD Bezo's identity, I can write alpha x times s of x plus beta x times a of x is equal to 1. If you actually look at this equation, if you take modulo of this equation with respect to a of x both sides, you will actually have something like alpha x times s of x is congruent to 1 mod a of x. So related to this, in my paper, I have defined an operator which I'm calling as eval operator. Essentially, it means evaluate operator. So I'm defining it as, you can actually see that it goes from something called a localization of a ring to the ring q of x, where this eval operator takes r of x by s of x at a of x and takes the inverse of s of x. Inverse of s of x is, if you go by this equation 3, the inverse of s of x is alpha x. So you have alpha x times r of x and then take remainder with a of x. So this operation is the generalization of Paravartya Sutra from linear factors to that of higher order polynomials. So in my paper, I have actually proved that fact. And alpha of x is inverse of s of x modulo a of x, alpha x s of x equal to 1 mod a of x. Now, some of you may have difficulty in, okay, how do we actually compute this? This is purely algebraic in nature and a whole theory is there. So you don't have to be really worried. But the fact here is you don't have to get into the serious algebra, but you can just follow the higher order substitution principle, which I was telling you in the previous slides. By following the substitution principle, you're essentially doing the same thing. Moreover, if I take something like this, r of x, s of x, and p of x, and then I can associate r by s with the coefficients of the form a naught plus comma a naught plus a1p comma a naught plus a1p plus a2p square, so on. This kind of association is called p-adic completion of a ring, where the degree of ai is less than p. I can easily show that if such a expression r of x by s of x where p power k is given, then I go to the kth term in this infinite tuple and then replace it, where the degree of aj of x is less than p. So using this eval operator, the Paravartya Sutra or the cover-up method, which I'm calling as the extended cover-up method, looks like this, where I have f of x product j going from 1 to k 1 by pj of x, where you will have the partial fraction terms can be obtained in a very straightforward manner, where you have eval f by gj evaluated at pj. What is gj? Gj is p1 to pk suppressing jth component. That's exactly what we were discussing in the cover-up method or the Paravartya Sutra, where I cover this pj and evaluate at that pj, right? So, okay, this may be difficult to see in this equation. Let us take k is equal to 3, just to take 3 element case and then see how the theorem looks like. So if you take k is equal to 3, if I have f by p1, p2, p3, then I will have eval f by p2, p3 evaluated at p1 by p1. Eval f p1, p3 evaluated at p2. F p1, p2 evaluated p3 by p3. The numerator, all of them are polynomials. So this is a partial fraction. And this is
nothing but the Paravartya Sutra as stated, expounded in the Vedic mathematics book, but for higher order, higher degree polynomials. Okay, so with this slide, I would like to briefly summarize what I have discussed. What I was discussing is, the whole talk is broken into three parts. The first part is the philosophy of Paravartya Sutra, taking that philosophy and trying to apply it for higher degree polynomials. That is the second part. Third part was showing the math behind. The math behind could be slightly becoming more involved, where we have to actually sit down and see how the operators work. But I want you to see that the same Paravartya Sutra holds even if your polynomials P1, P2, P3 are some general polynomials, not necessarily linear polynomials or powers of linear polynomials. That's exactly what I want to impress on all of you, that when we take these ancient sutras or ancient principles, which we as Indians are well founded on, we have to think hard about them, take them seriously. And then with the modern day technology and modern day science and mathematics, we can put it in a good wrapper to get or achieve what we want. So I would like to summarize that as a simple formula, that belief in ancient sutras plus application of modern Shastra gives us success. Thank you for your attention. Okay, ma'ams, I'm done. I hope I didn't cross the time. Yeah, I think some more time is there. Okay. थैंक यू वेरी मच उदय किरण जी, आपने बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग आपका ये जो आपकी डिस्कवरीज कहना चाहिए मुझे, आपने कई चीजें जैसे कि आपने कोशेंटिंग है, ऑपरेटर्स का भी यूज किया, एवल लास्ट में आपने एवल ऑपरेटर्स आपने दिखाया कि आपने कैसे अप्लाई किया है, और एक मॉड्यूलो यूज किया, मतलब आपने थ्योरी ऑफ नंबर्स से आप अलजेब्रा में पहुंच गए। Excuse me, आवाज आ रही है? Ma'am, you are not visible. Can you open your video? Madam is visible. She's visible, ma'am. Yes. She's visible. Yes, yes. I think you have to go to that window, I feel. Sir, please stop sharing your slide. I think, yeah, that is the first thing I have to do. Yes. I'll just give me one moment. Yeah. Okay. I think now it will be better. उदय जी, मैं आपको ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा ये वाला, और आपने सच में बड़ा थॉट प्रोवोकिंग और एक डीप थिंकिंग के साथ आपने कुछ चीजें नए ढंग से पेश कर दी, और मुझे ये भी महसूस हुआ कि हमने क्यों इसको एक वैदिक नाम देके इसको एक बिल्कुल परे रखा हुआ था बहुत टाइम से। तो कुछ चीजें तो इतनी आसान हो गई, जैसे कि पार्शियल फ्रैक्शन आपने उसको कंसीडर किया, रिमाइंडर थ्योरम से आप शुरू हुए, और उसके बाद में कुछ ऑपरेटर्स भी आपने यूज करे, और थ्योरी ऑफ नंबर्स से लेके आप अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा और कुछ एब्स्ट्रैक्ट का अलजेब्रा का पार्ट भी इसको छूता हुआ मुझे नजर आया। तो आपका जो ये जो है बहुत इससे जरूर स्टूडेंट्स इससे फायदा उठाएंगे, क्योंकि आपने कुछ एक चीजें ऐसी समझाई, मतलब एक आपकी चीजों में ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स नजर आया। आपने एप्लीकेशन ऑफ पार्वत्य सूत्रा को अलग अलग ढंग से, और उसकी एक आप फॉर हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स, आपने उसके पीछे क्या फिलॉसफी है उस चीज पे आपने एम्फेसिस किया, ताकि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, वो
इससे जरूर प्रेरणा लेके कुछ नए चीज़ों की ओर बढ़ेंगे, सोच पाएंगे। तो सच में मुझे जो है बहुत अच्छा लगा, मैं ये कहूँगी। और कुछ आपके लिए ये कहते हुए कि डूइंग द बेस्ट एट दिस मोमेंट पुट्स यू इन द बेस्ट प्लेस फॉर द नेक्स्ट मोमेंट। तो धन्यवाद करती हूँ मैं आपको इस इस वर्कशॉप के माध्यम से। और अच्छा है आप ऐसे ही और करते रहें, ताकि क्योंकि ये हायर मैथमेटिक्स के लिए बड़ा अच्छा संदेश है आपका ये जो लेक्चर है। ठीक है, नमस्कार करती हूँ मैं, धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद मैम। Thank you, ma'am, for your generous comments. Welcome. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now I would like to invite Professor Shivraj sir to say something about the session, or Uday Kiran sir. Sir, please welcome. Are you hearing us? Can you hear me? Yes, sir. You are audible. Yeah. Thanks a lot, Dr. Nidhi Handa ma'am, for your nice comment, and thanks a lot, Dr. Uday Kiran sir. It was wonderful to listen to you, and Dr. Nidhi Handa is the suitable persons to justify all the content you have spoken about. But overall, it was very much interesting, and here in this department, we want to develop a center where we can discuss recent development regarding Vedic mathematics. So I hope that in future, we will also have active collaborations and cooperations from your side. And also thanks to Dr. Sonia for nicely conducting the sessions. Thanks a lot. Thank you so much, sir. Thanks for nice comments, sir. Sir, okay, now I would like to say about tomorrow's session. There is a little change for tomorrow's session. Actually, कल 3 सेशन होने वाले थे, और कुछ चेंजेस की वजह से हम 3 की जगह 4 सेशन करेंगे कल। प्रोफेसर आशीष अरोड़ा सर पहले सेशन के लिए होंगे, देन डॉक्टर प्रशांत शर्मा सेकंड सेशन में, डॉक्टर कोमल असरानी मैम थर्ड सेशन में रहेंगी, और फोर्थ सेशन होगा डॉक्टर राकेश भाटिया जी का, जो कि आप संडे में सुनने वाले थे, वो आप कल सैटरडे में लेंगे। और उसके बाद में संडे में हम 2 लेक्चर लेंगे, तेजस कुलकर्णी जी का और डॉक्टर निधि हांडा मैम का। तो इस तरीके से हमारा जो शेड्यूल है, वो स्पीकर सभी रहेंगे हमारे साथ, बस शेड्यूल में थोड़ा चेंज है ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, that's why. So validatory function after that we will induct. And now for today, thanks. We will see tomorrow. Thank you.